सभी को प्लीज गो अहेड। जी नमस्कार। सभी को वेलकम है आज की और एक टीएस त्रिवेणी ट्यूसडे मीटिंग में। आज का टॉपिक है अदृश्य जगत के अदृश्य सहायक। ये मीटिंग शुरू करने से पहले हम रेवा लॉज, रोहित लॉज और ज्योति लॉज का तीनों का त्रिवेणी संगम है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हर्षवर्धन जी से, जो यूनिवर्सल इन्वोकेशन से मीटिंग की शुरुआत करें। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है। Thank you, Archana ji. Let us begin with the universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. ओ hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तरन मुंशी जी से, जो ये आज की सभा के मॉडरेटर रहेंगे। तरन मुंशी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रत्ना मुंशी जी, और सभी स्पीकर्स का स्वागत है। अर्चना जी, रमेश जी, सारंग जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। तो हम बस सब शुरू करते हैं एक छोटे से परिचय के साथ अर्चना पांडे जी के, और उसके बाद फिर लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सॉरी, मेरा फोन आ गया। अर्चना जी के बारे में चंद लाइनें हैं, लेकिन उस लाइन में एक बहुत बड़ा सोर्स है कि अर्चना पांडे जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की सीएनपी पीजी कॉलेज इलाहाबाद से, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संबंधित है और प्रयागराज में स्थित है। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, 6 किताबों का संकलन किया है, एडिटिंग किया है, एक किताब का ट्रांसलेशन किया है। लगभग अपने जीवन में 80+ रिसर्च पेपर उन्होंने दिए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं 38, और लेक्चर्स तो उन्होंने 50+ दिए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए 13, और 16 एक अवार्ड्स भी जीते हैं। तो अर्चना जी, आप जब भी कोई विषय लेके आती हैं, एकदम अद्भुत विषय होता है। इससे पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप जो विषय लेकर आई थी वो साउंड का विषय था, और वो भी एकदम अ, अच्छी तरह से सबने ग्रैस्प किया। तो आज के विषय के लिए सभा आपको समर्पित है, शुरुआत कीजिए। आप हिंदी में संबोधित करेंगी और पीपीटी भी आप होंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एक अर्चना मिनट मुंशी जी। माफ और कीजिएगा मैम, एक मिनट माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट करने के लिए मैं सभी को बताना चाहूंगी कि अर्चना मैम अब एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, शी इज नाउ प्रोफेसर इन सीएमपी डिग्री कॉलेज इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओह, अच्छा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा। जी थैंक यू हिमानी। तुमने अपने हिसाब से करेक्शन किया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसोसिएट प्रोफेसर है कि प्रोफेसर है। एक टीचर हूँ, ये मैं अपने को मानती हूँ, वो तो और बिल्कुल सही। टीचर के साथ एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हमेशा लाइफ लॉन्ग सीखना होता है। तो पहले स्टूडेंट ऑफ ए टीचर हूँ। थैंक यू हिमानी। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। अर्चना मुंशी जी, तरन मुंशी जी, रमेश जी, सेंगर साहब जी। तो मैं शुरू कर रही हूँ अपना टॉपिक जो आपके सामने है कि अदृश्य जगत के अदृश्य सहायक। तो साधारणतया हम सबका विश्वास उन्हीं वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं में होता है जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और जो हम नहीं देख सकते, या यूं कहूं कि जो कुछ हमारी इन पांचों इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उसके अस्तित्व में हमारा विश्वास नहीं होता। और अदृश्य जगत की बात करने में तो ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि किसने देखा है। तो आइए ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि अदृश्य जगत क्या है। फिर इस अदृश्य जगत में काम करते हुए अदृश्य सहायकों की हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म विद्या यानी थियोसॉफी के अनुसार हमारे इस स्थूल शरीर,
जो हम लोग को दिखता है को लेकर 7 शरीर हैं और ये 7 लोकों में निवास करते हैं। ये 7 शरीर और 7 लोक एक दूसरे में अंतर्व्याप्त हैं, बस इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। हर लोक पहले से लोक के कंपैरिजन में बहुत फाइन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो मैं यहाँ केवल उन 7 शरीरों का नाम ले रही हूँ और उन 7 लोकों का भी। तो जो पहले जो लोक है वो है, सबसे पहले ये हमारा पृथ्वी लोक जिसको भूलोक कहते हैं, या स्थूल जगत, फिर भुवर लोक, मनस लोक, बुद्धिक, निर्वाणिक, परानिर्वाणिक और महापरानिर्वाणिक। और हमारे 7 शरीर जो इन लोकों में निवास करते हैं वो है स्थूल शरीर, भुवरलोकीय शरीर या एस्ट्रल बॉडी, मनस शरीर, बुद्धिक शरीर, आत्मिक शरीर आदि। इन 7 लोकों और 7 शरीरों में केवल स्थूल जगत ही है जो हमें दिखाई देता है, बाकी सब अदृश्य जगत है और इनमें निवास करने वाले हमारे जो शरीर हैं वो अदृश्य हैं। अब हम भूलोक, भुवर लोक और मनस लोक ये कैसे एक दूसरे में अंतर्व्याप्त हैं, पहले स्थूल जगत है, फिर भुवर लोक है, फिर मनस लोक है, ये समझने का प्रयास करेंगे। भूलोक को यानी पृथ्वी लोक को यदि हम ठोस माने, भुवर लोक को यदि हम तरल या द्रव्य से माने और मनस लोक को यदि हम वायु से माने, तो हम समझ सकते हैं कि प्रकृति की ये तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि एक बोतल में बालू भरा जाए, फिर उसमें जल डाला जाए, फिर उसमें वायु पहुंचाई जाए, तो ये तीनों रूपों के पदार्थ एक ही जगह पर अट जाएंगे। तो आज हम यहाँ केवल भूलोक यानी पृथ्वी लोक और भुवर लोक की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अदृश्य सहायक होते हैं वे भुवर लोक के ही वासी होते हैं। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भुवर लोक कैसा होता है। तो ब्रह्म विद्या या थियोसॉफी के अनुसार भुवर लोक में भी पृथ्वी की तरह ही सब कुछ होता है, परंतु वो बहुत सूक्ष्म अणुओं और परमाणुओं का बना होता है। जैसे घर, सड़कें, पेड़ पौधे, फूल, बगीचे, पाठशालाएं आदि सब वहां पर भी होती हैं, पर वो वैसे नहीं दिखाई देते जैसे कि पृथ्वी पर। उदाहरण के लिए कोई फूल भुवर लोक में केवल ऊपर से नहीं दिखता, उसके अंदर तेजी से घूमते हुए अणु परमाणु, ऊर्जा की तरंगे और उसके रंग भी दिखते हैं, और तो और आप उसके आर पार भी देख सकते हैं। और इसका विस्तृत वर्णन थियोसॉफी की बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें कि मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद यानी मृत्यु के बाद जीव की चेतना भुवर लोक में जागृत होती है। वैसे तो हर रात सोते समय हमारी एस्ट्रल बॉडी शरीर से निकलकर एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह दृश्य सहायक कौन है। तो ये सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, वो जीवन मुक्त महात्मा हो सकते हैं, ऐसे सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं जो शरीर छोड़कर भुवर लोक में निवास कर रहे हैं, या जीवित रहते हुए भी जो भुवर लोक में निद्रा काल में पहुंच जाते हैं, या जागते हुए भी आ जा सकते हैं। ऐसे बहुत से जीवन मुक्त महात्मा भी हैं। और अब आइए कुछ उन घटनाओं का जिक्र करें जो C.W. लेडबीटर की पुस्तक इनविजिबल हेल्पर से ली गई है, जिनमें इन अदृश्य सहायकों ने पृथ्वी पर रहते हुए कैसे लोगों की मदद की उसके बारे में पता लगता है। और अब हम आपको ये कहानियां बताते हैं। ये कहानियां कोरी कल्पना नहीं है, ये सच्ची हैं और क्लेयरवॉयंट्स के द्वारा देखी हुई हैं, तो इसलिए इन कहानियों की सच्चाई में कोई शक नहीं है। तो एक बार अफ्रीका के मैकबेले लैंड देश में विद्रोह चल रहा था। उस देश में एक किसान का परिवार निश्चिंतता से सो रहा था। उन्हें अनुमान भी नहीं था कि केवल कुछ मील दूर जंगली दुश्मनों के निर्दय झुंड हत्या और लूट की योजना बना रहे हैं। ये अदृश्य सहायक एक महिला थी। उसे सोए हुए परिवार को किसी प्रकार बताना था, इस भयंकर संकट से उसे परिचित कराना था। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए लूटपाट मची हुई है और एक अदृश्य सहायक की महिला है जिसको कि उस परिवार को जगाना था। उसने सोए हुए किसानों के मस्तिष्क में संकट के विचारों की तरंगे भेजना आरंभ किया, पर उसका ये प्रयास असफल हुआ। समय बहुत कम था, अतः उस महिला अदृश्य सहायक ने उस घर की स्त्री को कंधा पकड़कर उठाने और अपने चारों ओर देखने के लिए प्रेरित किया। कुछ सेकंड के लिए उसको स्थूल रूप धारण करना पड़ा ताकि वो स्त्री को उठा पाए। जैसे ही वह स्त्री का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुई, वह अदृश्य हो गई। अचानक जगने पर उस स्त्री ने पहले तो इस चेतावनी को स्वप्न समझकर टालने की कोशिश की, पर सौभाग्य से वह उठी। उसने चारों तरफ देखा, घर के भीतर सब कुछ ठीक था,
पर खिड़की खोलने पर उसे दूर प्रचंड अग्नि के जलने से आकाश लाल दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने पति के और परिवार के अन्य लोगों को जगाया। वे इस संकट को तुरंत समझ गए, बिना एक पल की भी देर किए पास के छिपने के स्थान पर भाग गए। उन दुष्टों ने घर को जला दिया, खेतों को नष्ट कर दिया, पर मनुष्यों का शिकार न मिलने पे वे निराश हुए और आगे बढ़ गए। इस प्रकार किसान व उसके परिवार के बच जाने पर उस महिला सहायक को बड़ी प्रसन्नता हुई। आइए अब एक छोटी सी दूसरी घटना देखते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है सिरिल। वो जीवित था, पर निद्रा काल में और कई बार जागते समय भी वह अपनी एस्ट्रल बॉडी में आकर सहायता करता था। यहाँ 3 बच्चे दिख रहे हैं तस्वीर में, जिसमें जो लड़का अलग से अकेला खड़ा है वो सिरिल है। यह अदृश्य सहायकों के दल में शामिल था। एक गांव में 2 बच्चे थे। जर्मनों ने सभी बच्चों को मार डाला था, बस यही 2 भाई बहन बचे थे। ये दोनों बच्चे एक झाड़ी के भीतर गड्ढे में छिपे थे, जहां तोप पर बंदूक बराबर चल रही थी। लड़ाई दिन रात चल रही थी, इसलिए बच्चे वहां से ना निकल सके। ठंड, सीलन और भूख से बच्चे मर रहे थे। भाई ने अपने सारे कपड़े छोटी बहन को पहना दिए और ठंड से मरने के करीब था। ऐसे ही समय में सिरिल ने स्थूल रूप धारण किया और उनके पास पहुंच गया। पहले तो बच्चे डर गए, पर सिरिल ने उन्हें समझाया कि वह उन्हें सहायता पहुंचाने आया है। सिरिल ने पहले उन्हें गर्मी और शक्ति पहुंचाई, फिर एक मृत सिपाही के झोले से निकाल करके कुछ रोटी और चटनी लाकर दी। जब बच्चों में कुछ शक्ति आई, तब सिरिल ने अपनी एस्ट्रल बॉडी में जाकर देखा और उन्हें फ्रांसीसी सिपाहियों के पीछे एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा दिया। उन सिपाहियों ने उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, जहां नर्स ने उन्हें गर्म कपड़ों से ढककर खाना खिलाया और सुला दिया। कुछ भले लोगों ने उनकी देखभाल का दायित्व ले लिया, क्योंकि उनके सभी संबंधी मार डाले गए थे। आइए तीसरी कहानी भी देखें। सिरिल अपने पृथ्वी लोक के जीवन में बच्चा ही था, पर उसमें सदाचार के अलावा सेवा का भाव बहुत था। अतः वह अदृश्य सहायकों के दल का अच्छा कार्य करता था। तो सिरिल ने अपनी उपयोगिता की एक और विधि खोज निकाली, और वह था जो नाविक होते हैं जहाज के, उनके मन पर प्रभाव डालकर पानी के जहाजों को बारूदी सुरंगों से बचाना। एक बार एक जहाज के संचालक को बारूदी सुरंग से बचाना था। वह अत्यंत अनुभवी और कुशल था। उसे अपने मार्ग से हटाना बड़ा मुश्किल था और संकट बिल्कुल निकट था। तो सिरिल ने अपना स्थूल हाथ बनाकर पहिए के साथ पहिए को स्वयं घुमा दिया। जब उस व्यक्ति ने वह हाथ देखा तो वह डर कर भागा। कुछ क्षण तक गड़बड़ी रही, पर सिरिल ने इस बीच जहाज को संकट से निकाल दिया, और जब तक अफसर आया वह पहिए का संचालन करता रहा। जब नाविक ने ये लोगों को बताया कि उसने एक छोटे से गोरे हाथ को पहिया पकड़कर घुमाते देखा, तो लोगों ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। आइए एक चौथी कहानी हम लोग देखें। इस बार अदृश्य सहायकों द्वारा एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोका गया। यह कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पर एक लेखक दिखाई पड़ रहे हैं, ये वरिष्ठ अदृश्य सहायक हैं, और साथ में वो एक बच्चा है सिरिल, ये दूसरा अदृश्य सहायक है। इन दोनों में उम्र का बहुत डिफरेंस है, पर ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये जो छोटा युवा अदृश्य सहायक था वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। अचानक उसने जहाज को आते देखा, और उसने एक बंद कमरे के चारों तरफ गंभीर उदासी के भूरे भूरे बादल देखे। उसने उस कमरे में प्रवेश करके देखा कि एक जहाज का अधिकारी आत्महत्या करने का विचार कर रहा है, और उसके हाथ में पिस्तौल है। दरअसल वह अधिकारी एक बहुत समझदार और सम्मानित व्यक्ति था, पर एक महिला के प्रेम में पड़कर उसने खातों से गबन किया और महिला को कीमती भेंट की। ये बात उस युवा अदृश्य सहायक ने अपने जो वरिष्ठ सहायक थे उनको बताई। इस बात के प्रकट होने पर बदनामी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, तो उसने अपने वरिष्ठ सहायक से प्रार्थना की। वरिष्ठ सहायक ने अपना शरीर सोफे पे डाला और वह अदृश्य होकर के वहां पर पहुंचा। अब इस युवा अदृश्य सहायक ने और उसके साथ वरिष्ठ सहायक ने उनके मन में ये विचार डालना शुरू किया कि आत्महत्या करने से उसकी माँ का शेष जीवन दुख में डूब जाएगा, अतः उसे अपनी भूल कप्तान के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। अब इस युवा अदृश्य सहायक ने ऐसी व्यवस्था की कि जब ये जाए तो कप्तान जागता हुआ मिले, और यही हुआ। अधिकारी ने आधे घंटे में सारी बात कप्तान को बता दी। कप्तान बहुत दयालु था,
जिसे अधिकार उसने अपने स्वयं गबन की राशि भर दी, जिसे अधिकारी ने बाद में आसान किश्तों में चुका दिया। इस प्रकार एक होनहार जहाज अधिकारी के जीवन की रक्षा हो सके, ये उसकी माँ है। और इस तरह से अदृश्य सहायकों ने एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचा लिया। अब आपको इसमें एक कहानी और सुनाती हूँ, ये इनविजिबल हेल्पर्स को ही लेकर के। एक रात्रि को जो लेखक है, यानी C.W. लेडबीटर की बात कर रही है, जो इस पुस्तक के राइटर है, वो अपने नियमित मामलों को देखने के लिए एक पहाड़ी सुरम्य मार्ग से जा रहे थे। लेखक का जो बाल सहायक था, उसको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। अब उसने देखा कि एक बालक धरती के भीतर मर रहा है। खोज करने पर पता चला कि 8 वर्ष का बालक बहुत बड़ी अंधेरी गुफा में भटक गया है। भूख, प्यास और निराशा से मृतप्राय हो रहा है। लेखक ने बाल सहायक को स्थूल रूप धारण कराया। घोर अंधकार के कारण प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, इसलिए हाथ से तेज रोशनी वाले लालटेन को लेकर बालक ने झुककर उस अर्धमूर्छित बालक को जगाया, उसको पानी पिलाया ताकि वह बैठ सके, होश में आ सके। अब उसको कुछ खाना खिलाने की बात थी, पर वो जब उन्होंने पूछा तो पता लगा कि वो अगली घाटी में रहता है। तो स्थूल रूपधारी जो सहायक थे, उन्होंने बच्चे को, जो बच्चा अदृश्य सहायक था, उसको छोड़कर बच्चे के पास वो उसके घर पहुंचे। उसके घर से उन्होंने रोटी और 2 सेब उठाए, रोटी और 2 सेब लिए, और उसके बाद उन्हें लेकर के वे पहुंचे। उनको अणु परमाणुओं के रूप में उन्होंने लिया और यहाँ वापस आकर के उनको परिवर्तित कर दिया। फिर से रोटी और सेबें उसको खिलाया, उससे बच्चे में कुछ शक्ति आई। और उसको शक्ति आने के बाद उन लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसने बताया कि वो पहाड़ों में घूमता फिरता था, उसने एक गुफा देखी, वह देखने को अंदर गया ही था कि उसके पांव के नीचे की जमीन धंस गई और वह नीचे की एक बड़ी गुफा में गिर पड़ा। गिरने के बाद वह बेहोश हो गया, क्योंकि उसने बताया कि जब वह जागा तो वहां घोर अंधकार था। ये देखकर सहायकों को आश्चर्य हुआ कि उसे अधिक चोट नहीं लगी थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरा था, पर उसके साथ मुलायम मिट्टी भी गिरी थी, इसलिए उसे कम चोट निकली लगी। उस छेद के रास्ते बाहर निकलना असंभव था, क्योंकि गुफा के बाजू चिकने थे। इसके अतिरिक्त वह बच्चा उस गुफा में 2 दिन तक घूमता रहा था, इसलिए उस छेद से वह मीलों दूर था। खोजने पर पता चला कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटा नाला गुफा में से निकलकर पहाड़ के किनारे खुले स्थान पर निकलता है। भोजन पानी पीकर बच्चा चलने के योग्य हो गया। दोनों ने मिलकर रास्ता बनाया और बच्चा उससे घिसक कर बाहर निकल पाया। पर अब सवाल था कि बच्चे को घर तक कैसे पहुंचाए। उसके पिता ने ढूंढने वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। युवा सहायक उसके क्रम को बदलवाने में असफल रहे, परंतु सौभाग्य से उनके साथ एक कुत्ता था जिसे विचार भेजकर चलाना आसान था। तो उस कुत्ते ने जब एक व्यक्ति का पजामा मुंह में पकड़कर अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया, तो उस व्यक्ति को लगा कि जरूर कोई कारण होगा और वो कुत्ते के साथ चल पड़ा। इस प्रकार जब बच्चा गुफा से बाहर आया, तब ये व्यक्ति, लोग, कुत्ता कुछ मील दूर थे। उस बच्चे ने अपने नए मित्र से घर चलने के लिए बड़े ही कृतज्ञ भाव से प्रार्थना की, पर सहायक बालक ने उसे समझा दिया कि उसके पास और भी कार्य हैं। उस बच्चे को एक टेकरी पर पहुंचाया, जहां से उसको वो मनुष्य लोग देख सकते थे, और शीघ्र ही शोर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इतना निश्चय हो जाने पर हमारे इस अदृश्य सहायक ने उस बच्चाए बालक से विदा ली और धीरे धीरे दौड़ाकर उसके मित्र के पास पहुंचा दिया। फिर उस सहायक ने अपना स्थूल रूप समाप्त कर दिया। उस सहायता प्राप्त बालक को लेश मात्र भी विचार नहीं आ सकता था कि उसका रक्षक पूर्णतः स्थूलधारी व्यक्ति नहीं था। उसके 1-2 असुविधाजनक प्रश्नों से उस सहायक ने आसानी से उसका ध्यान मोड़ दिया। उसकी कहानी सुनने पर उसके संबंधियों को संभवतः यह समझने में कठिनाई हुई होगी कि उस निर्जन स्थान में एक गैर देहाती अजनबी कैसे पहुंचा। और मैं अब 15 मिनट के बाद अपनी बात को विराम देती हूँ। अर्चना मुंशी जी आगे इसको संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल कर रही हूँ। रमेश जी, आपका स्वागत है।
तो आप जब कहानियां सुनाएंगे गुजराती में तो मैं धीरे धीरे उसको इस पर भी लेता जाऊंगा। तो आपका समय शुरू हो उसके पहले एक छोटा सा आपका परिचय देना चाहूंगा रमेश जी। रमेश जोलिया पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने LIC ऑफ इंडिया में सर्विस की है एज ए डिविजनल मैनेजर। और उसके साथ ही एक मिनट, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया 2010 में अहमदाबाद लॉज से। इस वक्त वे प्रेसिडेंट हैं अहमदाबाद लॉज के। और एक जो अंध दिव्यांग होते हैं उनकी एसोसिएशन के साथ मिलकर वे लेक्चर्स देते हैं। और बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन गुजरात में जाकर आई डोनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत ही नेक कार्य करते हैं और त्रिवेणी के रेगुलर वक्ता हैं, ज्ञाता हैं। आज के विषय पर आपका स्वागत है। गुजराती में आप अपना कहिए और मैं जैसे ही आप बोलेंगे PPT दिखाना शुरू करूँ। थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए सर। Yes, now I am audible. Hello, यस, यू आर ऑडिबल सर। sir. Thank you, Taralji, for introduction. અને અર્ચનાજીનો પણ આભાર માનો. અર્ચનાજી પાંડેજી કહેવું પડશે કારણ કે અત્યારે બંને બે અર્ચનાઓ છે. તો અર્ચના પાંડેજીને પણ આભાર માનું છું. અને અદ્રશ્યની આ વાત શરૂ કરું એ પહેલા એમ કહું કે મને એમ થયો વિચાર આવતો હતો કે અદ્રશ્ય કેવી રીતે થતું હશે કે કેવી રીતે બનતું હશે. તો આ ફોન પર મેં એક બટન દાબું તો મને કોઈ જોઈ જ ના શકે, એટલે હું પોતે અદ્રશ્ય થઈ જાઉં, છતાં હું તમને બધાને જોઈ શકું. અને પાછું એક બટન દાબું એટલે હું પાછો બધા મને જોઈ શકે. એટલે અદ્રશ્ય શું છે એનો ખ્યાલ પણ આની સાથે મળી ગયો. થેન્ક યુ. આપણો વિષય છે અદ્રશ્ય જગતના અદ્રશ્ય સહાયકો. સાધારણ રીતે આપણો વિશ્વાસ એવી વસ્તુઓ, પરિસ્થિતિઓ અને ઘટનાઓ પર હોય છે જે આપણે જોઈ શકીએ, સાંભળી શકીએ અથવા તો સ્પર્શ કરી શકીએ. આથી જે આપણે પાંચે ઇન્દ્રિયો છે એની પહોંચની બહાર હોય છે તેના અસ્તિત્વમાં વિશ્વાસ નથી પડતો. અને તેને સાંભળતા જ બોલાઈ જવાય છે કે કોણે જોયું છે, કોણે સાંભળ્યું છે. તો આવો આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે અદ્રશ્ય જગત શું છે અને તેમ કરતા અદ્રશ્ય જગતના સહાયકોની પણ વાત કરીએ. બ્રહ્મ વિદ્યા એટલે કે થિયોસોફી અનુસાર આપણા સ્થૂળ શરીરમાં 7 શરીર છે અને તે 7 લોકોમાં નિવાસ કરે છે. આ 7 શરીર અને 7 લોક એ શરીરમાં જ અંતર્વ્યાપ્ત છે, ફક્ત તેમની પ્રકૃતિ અલગ અલગ છે. દરેક બીજું શરીર પહેલાથી જુદા એટમ્સ અને મોલિક્યુલ્સનું બનેલું છે. હું અહીં ફક્ત શરીર અને લોકોના નામ લઉં, જેમ કે ભૂલોક, ભુવરલોક, પૃથ્વીલોક, મનસલોક, બુદ્ધિક, નિર્વાણ, પરાનિર્વાણિક. અને તેમાં નિવાસ કરતા 7 શરીરો છે. સ્થૂળ શરીર, ભૂલોક શરીર, એટલે કે એસ્ટ્રલ બોડી, માનસિક શરીર, બુદ્ધિક શરીર વગેરે વગેરે. આ 7 જગતોમાંથી ફક્ત સ્થૂળ શરીર જ દેખાય છે અને બાકીના બધા અદ્રશ્ય રહે છે. તેમાં નિવાસી શરીરો પણ અદ્રશ્ય છે. તો ચાલો ભૂલોક, ભુવરલોક અને મનસલોક એકબીજામાં કેવી રીતે અંતર્વ્યાપ્ત છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પૃથ્વી લોકોને ભૌતિક ગણી શકીએ, ભુવરલોકને તરલ કે દ્રવ્ય ગણીએ અને મનસને વાયુ રૂપે મેળવીએ તો સમજાશે કે પ્રકૃતિની ત્રણેય અવસ્થાઓ એક જ ખ્યાલ પર અથવા એક જ સાથે રહી શકે છે. જેમ કે એક બોટલ લઈએ અને એમાં પ્રથમ દાણા નાખીએ, તેની ઉપર પાણી નાખીએ અને પછી વાયુ નાખીએ. ત્રણેય પદાર્થો એકમાં જ છે. અને આપણે દેખાશે કે ભૂલોક ને ભુવરલોકમાં પણ આ ચર્ચા કરીશું, કારણ કે અદ્રશ્ય સહાયક ભુવરલોકમાં જ વસે છે. થિયોસોફી અનુસાર ભુવરલોકમાં પણ પૃથ્વીની માફક જ બધું હોય છે.
પણ તે બહુ સૂક્ષ્મ અણુઓનું પરમાણુઓનું બનેલું હોય છે. એટલે લાગે એવું જ, પણ છતાં એ બહુ સૂક્ષ્મ અણુઓનું બનેલું હોય છે. ત્યાં ઘર, સડક, પૃથ્વી, ફૂલ, બગીચા, પૃથ્વી દેખાય છે તેવા નથી હોતા. દાખલા તરીકે એક ફૂલ ભૂવરલોક ઉપર ન દેખાય, પણ તેની અંદર ઘૂમતા અણુ, પરમાણુ, તરંગો, રંગ દેખાય, ને તેની આરપાર પણ દેખાય, એની આરપાર પણ જોઈ શકો. વિસ્તૃત વર્ણન થિયોસોફીના પુસ્તકોમાં હોય છે, એટલે અહીંયા આપણે એને વધારે નહીં કરીએ. હવે મૃત્યુ પછી જીવની ચેતના ભૂવરલોકમાં જાગૃત થાય છે. તેવી રીતે રાત્રે સૂતા સમયે પણ આપણું એસ્ટ્રલ બોડી નીકળી જઈ એસ્ટ્રલ જગતમાં પહોંચી જાય છે. તો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આ અદ્રશ્ય સહાયકો કોણ છે? એ સિદ્ધ પુરુષો હોઈ શકે છે, જગત મુક્ત મહાત્માઓ પણ હોઈ શકે છે, એવા સદાચારી વ્યક્તિઓ પણ હોય જે શરીર છોડી ભૂવરલોકમાં વાસ કરે છે, અથવા તો જેઓ અતીત હોવા છતાં ભૂવરલોકમાં નિદ્રા કાળે અથવા તો જીવતા પણ આવી શકવા શક્યમાન હોય છે. C.W. લેડબિટર સાહેબે જે પુસ્તક લખ્યું છે ઇનવિઝિબલ હેલ્પર્સ, એમાં દર્શાવેલ કેટલીક એવી ઘટનાઓ જોઈએ કે જેમાં અદ્રશ્ય શરીરોને પૃથ્વી ઉપર રહેતા લોકોને કેવી રીતે મદદ કરી. એકવાર આફ્રિકામાં મેકબેલેન્ડ દેશમાં વિદ્રોહ ચાલી રહ્યો હતો, અને તે દેશમાં એક કિસાન પરિવાર નિશ્ચિતપણે સૂઈ રહ્યું હતું. એને ખ્યાલ પણ ન હતો કે એનાથી થોડે માઇલ દૂર જ જંગલી દુશ્મનોનું ઝુંડ હત્યા અને લૂંટની યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ એક અદ્રશ્ય સહાયક મહિલાને એ કુટુંબને ભયંકર એમાંથી બચાવવી હતી. એણે કિસાનના મસ્તકમાં વિચારો નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ ન સફળ થયો. સમય ઓછો હોવાથી એને ઘરની જમીનના ખભો પકડીને જગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ જાગતા જ એ મહિલાને થયું કે આ તો સ્વપ્ન જ હોવું જોઈએ, કારણ કે એને પેલા માણસ તો કશું દેખાતો ન હતો. પણ સૌભાગ્યવશ જાગીને એને બધું જોયું, અને છેવટે બારી ખોલી ત્યારે એને જોયું કે દૂર પ્રચંડ અગ્નિનો દાવાનો છે, અને એનું દર્શન થતા જ તેણે તરત જ પરિવારના સભ્યોને જગાડ્યા અને દૂર છુપાવાની જગ્યા પર ચાલી ગયા, અને એ બધા બચી ગયા. દુષ્ટોએ ઘર સળગાવી દીધું, ખેતરો નષ્ટ કર્યા, પણ મનુષ્યનો શિકાર ન મળતા નિરાશ થઈ ગયા અને ચાલી ગયા. કિસાન પરિવાર બચી જતા મહિલા સહાયકને પ્રસન્નતા થઈ. આવો એક બીજી ઘટના જોઈએ. એક બાળક હતું, એનું નામ સિરિલ. તે નિદ્રાકાળમાં અને ઘણી વખત જાગતા પણ એસ્ટ્રલ બોડીમાં આવી સહાયતા કરતો હતો. એ અદ્રશ્ય સહાયક દળમાં સામેલ હતો. એટલે આવું એક દળ છે, એ પણ એક ખરે આનંદની વાત છે. એક ગામમાં જર્મનોએ મોટા બાળકોને મારી નાખ્યા હતા, પણ 2 બાળક બચી ગયા હતા. એ ઝાડીની પાછળ ખાડામાં હતા. તોપો ને બંદૂકો ચાલતા હતા. એ બધાની વચ્ચે ભૂખને ઠંડીથી એ લોકો પીડાતા હતા. એમાં એક ભાઈ હતો, એટલે એને પોતાને કપડાં કાઢીને બેનને ઠંડીથી બચાવવા આપી દીધા. એટલે તે પોતે મૃત્યુની નજીક સરકી ગયો હતો, કારણ કે એને કપડાં કાઢી નાખેલ ખૂબ ઠંડી હશે. એ સમયે સિરિલે ગરમી આપીને ગરમી પણ આપી, અને એને ખોરાકની જરૂર હતી, તો એક મૃત સિપાહીના જોડીમાંથી રોટલી ને ચટણી કાઢીને એમને આપી. આથી એ બંને બાળકોમાં શક્તિ આવી. એમને બાજુના કેમ્પ પર પહોંચાડ્યા. સિપાહીઓએ તેમને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા. કેટલાક ભલા લોકોએ તેમના સંભાળ પણ લીધી, કારણ કે આ બંને બાળકના બધા સંબંધીઓ માર્યા ગયા હતા, અને એટલા માટે એ લોકોએ એને સારી રીતે સંભાળ લીધી. સિરિલ પૃથ્વી લોક જીવન મુજબ બાળક હતો, પણ તેનામાં સદાચાર અને સેવાના ભાવ બહુ હતા. આથી સહાયકો દળના સહાયક દળનો સારો કાર્યકર પણ હતો. તેણે પોતાની ઉપયોગિતાની એક બીજી ઝલક પણ બતાવી હતી. નાવિકોના મન પર પ્રભાવ પાડી જહાજોને બારૂદી સુરંગોથી બચાવતો હતો. એકવાર એક જહાજને બારૂદી સુરંગોથી બચાવવું હતું. કેટલાક એનો જે સંચાલક હતો એ ખૂબ અનુભવી અને કુશળ હતો. એને હટાવવો મુશ્કેલ હતો,
અને જહાજ એ જ રીતે ચાલ્યું જાય તો સુરંગોમાં અથડાઈને મારી જાય. અને જહાજ ધીરે ધીરે સુરંગની પાસે જઈ રહ્યું હતું, બીજો કોઈ રસ્તો ન હતો, એટલે એને હેલ્પરે પોતાનું હાથનું રૂપ લઈ, સ્થૂળ રૂપ લઈ અને એનું હેન્ડલ ગુમાવી દીધું, એટલે જહાજ બીજી સાઈડે સરકી ગયું અને બચી ગયું. નાવિક આ હાથ જોઈને ડરી ગયો હતો, તે નાસી ગયો. પણ સિરિલે જહાજને પણ કંટ્રોલ કર્યો અને અફસરના આવતા સુધી તેનું સંચાલન કર્યું. સંચાલકે જ્યારે આ હાથની વાત કરી તો બધાએ તેની હાંસી ઉડાવી કે એવાથી કોઈ અદૃશ્ય હાથ હોઈ શકે, પણ આવા હોય છે, એક હકીકત. એકવાર આ અદૃશ્ય હાથોએ એક વ્યક્તિને આત્મહત્યા કરતા પણ બચાવ્યો હતો. એક યુવા અદૃશ્ય સહાયક બંગાળની ખાડી પર ચક્કર લગાવી રહ્યો હતો. ત્યાં એક જહાજના રૂમમાં ગંભીર ઉદાસીના ભૂરા ભૂરા વાદળ જોયા, ને ત્યાં જઈને જોયું તો એક જહાજના અધિકારી આત્મહત્યાનો વિચાર કરતા હતા. એના હાથમાં પિસ્તોલ હતી અને હવે સમય ઓછો હતો, કારણ કે એ ગમે ત્યારે આત્મહત્યા કરી લે એવું હતું. તે અધિકારી એક મહિલાના પ્રેમમાં હતા અને ખાતાઓમાંથી પૈસા ઉપાડીને કિંમતી ભેટ એ બેનને એની પ્રેમિકાને આપી હતી. આ વાત બહાર આવી અને બદનામીનો એને ડર લાગતો હતો અને એટલા માટે આત્મહત્યા કરવા માંગતો હતો. ઘરમાં તેની વૃદ્ધ માતા હતી જે એને ખૂબ પ્રિય હતી. સહાયકોએ શું કર્યું કે તેના મનમાં વિચારો મૂક્યા. આમ કરવાથી એવો વિચાર મૂક્યો કે આમ કરવાથી તારી માતાનું જીવન દુઃખી થઈ જશે. અને તેણે ભૂલ કેપ્ટન સમક્ષ જણાવી દેવાનું નક્કી કર્યું. અદ્રશ્ય સહાયકે તેને કેપ્ટન જાગતા જ મળે તેવી વ્યવસ્થા કરી આપી. અધિકારી કેપ્ટનને અડધા કલાકમાં જ બધી વાત બતાવી દીધી. કેપ્ટન દયાળુ હતો, પોતાના ખાતામાંથી રકમ ભરી દીધી, જે અધિકારીએ પછી હપ્તે પરત કરી. આમ કુશળ જહાજ અધિકારી અને જહાજનો બચાવ થઈ ગયો. આવો એક ઓર વાત કે એક રાત્રે લેખક એટલે કે આપણા લેડબીટર સાહેબ પહાડી વિભાગમાં પસાર થતા હતા, ત્યારે જે જહાજને બચાવનાર બાળ સહાયક હતો એને આવીને જણાવ્યું કે એક બાળક ધરતીની નીચે મરી રહ્યો છે. શોધતા જણાવ્યું કે 8 વર્ષનો બાળક મોટી અંધારી ગુફામાં ફસાઈ ગયો છે અને નિરાશાથી મૃતપ્રાય થઈ ગયો છે. લેખકે બાળ સહાયકને સ્થૂળ રૂપ ધારણ કરાવીને લાલ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરી તો જણાવ્યું કે બાળક અર્ધમૂર્છિત અવસ્થામાં હતો. પ્રથમ જરૂરિયાત પાણીની હતી. બાજુની નાળામાંથી હથેળીમાં પાણી લાવી અસહાય બાળકે પીવરાવ્યું. બાળકને આનાથી હોશ આવ્યો, એ બેઠો થયો. એણે જણાવ્યું કે તે પાછળની બીજી ઘાટીમાં રહે છે, પણ આવી કોઈ ઘાટી નજર ના આવી. ફરીથી તે બાળકને તેના ઘરના વિચારો કરવા જણાવ્યું. એથી જોઈ શકાયું કે તેના વિચારોના આધારે જણાવ્યું કે સ્થળ દૂર હતું, ત્યાં લોકો એકઠા થયા હતા, ચિંતા કરતા હતા કે આ બાળક ક્યાં ગયું હશે, ક્યારે મળશે, કેવી રીતે મળશે. એ લોકો માટે વિચારો મોકલ્યા, પણ તે લોકોને એ વિચારો ન પહોંચ્યા, કારણ કે એ લોકો ચિંતામાં અને પરેશાન હતા, એટલે આ વિચારોને પકડી ન શક્યા. આથી સહાયકે તેના ઘરમાંથી કોઈ ખોરાક લઈ અને એને અણુપરમાણુમાં ચેન્જ કરી નાખ્યો. એટલે કે રોટલી, માખણ, સફરજન એવું કંઈક લઈ એને અણુપરમાણુમાં કન્વર્ટ કરી અને પછી ગુફા પર આવી પાછું એને સ્થૂળ રૂપમાં બનાવી પરિવર્તન કરી અને ખવડાવ્યું. લેખકે સહાયક દ્વારા પૂછાયું કે ત્યાં સુધી કેવી રીતે આવ્યો. બાળકે જણાવ્યું કે તે ફરતો ફરતો ગુફામાં આવ્યો હતો, પણ ત્યાં જમીન ફસકી ગઈ એટલે નીચે મોટી ગુફામાં પડી ગયો. એ પડ્યો ત્યારે એને વાગ્યું નહીં, કારણ કે તે વખતે નરમ માટી પણ એની સાથે જ પડી હતી, એટલે માટીમાં એ બચી ગયો. શોધતા જણાવ્યું કે ગુફા નહીં, હવે એને બહાર કેવી રીતે કાઢવો એ પ્રશ્ન હતો. તો નજીકની ગુફાની નજીકમાં એક નાળી હતી,
અને તેના દ્વારા પહાડના ખુલ્લા વિભાગ તરફ એ ખુલતી હતી, એટલે તેના દ્વારા એ લોકોએ બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ બાજુ એ બાળકને શોધતા લોકો પાસે વિચારો મોકલવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ લોકો ચિંતિત હતા એટલે સ્વીકારી નહીં શક્યા. પણ એમની સાથે એક કૂતરો હતો. એ કૂતરાને પણ કદાચ એમણે એવા સંદેશા મોકલ્યા. એટલે કૂતરો એક માણસનો કપડું ખેંચી અને એને દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એટલે લોકો એની પાછળ પાછળ આવે છે. બાળકને આ બાજુએ બહાર લાવીને પહાડ પર ટોચ પર મૂક્યો, અને પેલી બાજુએ કૂતરાએ પણ એ માણસોને લાવીને એવી જગ્યાએ મૂક્યા કે એકબીજાને જોઈ શકે. અને પછી આ બાળકે પોતાના અવાજથી બધાને જણાવ્યું, અને ત્યારે એ બાળકે જે બચી ગયું હતું એ બાળકે પેલા એને વિનંતી કરી કે તું મારી સાથે ત્યાં સુધી આવ. ત્યારે એને કહ્યું કે ના, હવે સામે તારા જાણીતા બધા માણસો આવી ગયા છે અને મારે બીજું કામ છે, એટલે હું નહીં આવી શકું. બચાવેલ બાળકને લેશ માત્ર પણ ખબર ના પડી કે તેને સહાયક પૂર્ણ રીતે શરીરધારી નહીં હતો. તેના રિશ્તેદારોને સમજવું મુશ્કેલ હશે કે અશરીરધારી કોઈ અજનબી કેવી રીતે તેને પહોંચ્યો હશે અને મદદ કરી હશે. અહીંયા પહેલો વિભાગ પૂર્ણ થાય છે. આભાર. थैंक यू सो मच रमेश जी. और मैं आमंत्रित करूंगा सारंग जी को. Thank you, Taralji, and a very good evening to everyone. Thank you, Sarang ji. Let me give you your small introduction. Of course, Sure. you are a very talented person. I'll just give you a small intro. Sarang ji is Assistant Registrar of IIT Kanpur and has handled corporate relations, distinguished alumni meetings at IIT Bombay, public relation and tourism development function at Global Vipassana Foundation. He is a trainer, mentor, coach at heart, and with the background in HRM and marketing from IIT Bombay. He has done MPhil in tourism management, BSc in hospitality, and MSc in yoga education, which enabled assignment with Marriott and Writer Corporation, not just in India, but also abroad in most of the places in UAE. He is a learner with a flair of deep understanding of life with holistic approach, theosophical foundation, and wellness. He is a people person, a team player who loves to connect, co-create lesson, and for advancement and for fun, and of course for education and understanding. सारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. ये आपकी पहली त्रिवेणी मीटिंग है. आपने क्लिष्ट हिंदी की एक अच्छे सब्जेक्ट को इंग्लिश में करने का भार संभाला. बहुत बहुत धन्यवाद. आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको आपकी उस कहानी को बताता जाऊंगा. धन्यवाद. Thank you so much, Taralji, for taking this initiative and bringing us all together and facilitating such a wonderful brotherhood where we all could grow and learn together. So thank you so much, and thank you everyone here for being present. My pranams to all of you. So today's topic, as shared with Archana ji and Ramesh ji before, is invisible helpers of the invisible world. This is based on a book by C.W. Leadbeater, and it was basically he's one of our central figures in Theosophical Society, known for his writings on clairvoyance, the astral plane, and spiritual evolution. This book was published in 1909. Sarang ji, एक request करूंगा. Please go with can start with the topic translation directly. with the topic, otherwise we'll run out of time, sir. Certainly. I'll just move to the topic. Yes. So generally, we believe only in things, situations, and events that we can see, hear, and touch. So we don't believe in the existence of things
we can't see, or rather anything that lies beyond the reach of our five senses. When we talk about the invisible world, we often hear statements like, "Who has seen it?" So let us try to understand what the invisible world is, and then we'll discuss the invisible helpers working in this invisible world. According to Theosophy, we possess 7 bodies in addition to this physical body, and these reside in 7 worlds. These 7 bodies and the 7 worlds are intertwined. And it can remain, for example, if a bottle is filled with sand, then water is poured into it and air is supplied to it, then all the 3 forms of matter will settle in one place. Today we'll discuss only the earth and the Bhuvarlok. Basically, we usually discuss only the earth and Bhuvarlok because the invisible helpers are residents of this world only. It is natural to ask what a planet is like. According to Theosophy, everything on the planet, that is Earth, is made up of very tiny molecules and atoms. For example, houses, roads, trees, flowers, gardens, schools, etc. They are visible on the Earth. A flower on the Bhuvarlok is not visible only from the outside, but it's more like a rotating molecules, atoms, waves, and colors, and it has its own patterns. Similarly, our astral, our existence is also in the astral world. Now the question arises that what is this astral world, or who are these invisible helpers? Then can they be Siddha Purushas? Could they be liberated Mahatmas? Can they be such virtuous person who after leaving their bodies are residing in this loka while being alive, and they can come to our realm or the physical realm, and I mean return back when I mean they can visit the physical realm as well as the Bhuvar Loka, both. So while they are awake, they can return back here and do some work when they are in their astral presence or in the sleep. So now let me recount some incidents taken from C.W. Leadbeater's book, The Invisible Helper, about how these invisible helpers helped people while living on Earth. One such example is once a rebellion was raging in the African nation of Madbel land. A farmer's family was sleeping peacefully. They had no idea that just a few miles away, ruthless groups of savage enemies were plotting murder and plunder. This invisible helper that you can see in the picture was a woman. She had to somehow alert the sleeping family to this terrifying thing which was going to happen. She began sending thought waves into the sleeping farmer's mind, but this attempt failed. Time was running short, so the female invisible helper decided to assume a physical form for a few seconds to grab the woman of the house by the shoulder and encourage her to look around. As soon as she succeeded in attracting the woman's attention, she disappeared. Upon awakening, the woman initially tried to dismiss the warning as a dream, but very fortunately, she was able to escape. She woke up and looked around.
Everything inside the house was fine. But when she opened the window, she saw the red sky from a raging fire in the distance. She immediately woke her husband and the rest of the family. They immediately recognized, and without any moment's delay, they escaped to a nearby hiding place. That's how, when these savages came and were burning and attacking things, the family could escape the disaster which was to fall upon them. And the woman helper was overjoyed at the farmer and family survival. Now, let us look at another incident. There was a child named Cyril. He was alive, but during sleep and sometimes even while awake, he would come in his astral body and help others. He was a part of the team of invisible helpers. He observed that there were two children in a village. The Germans had killed all the children, leaving only these two siblings to survive because somehow they managed to hide in a hole in the bushes where artillery and gunfire couldn't reach them, and they were still being those areas were still constantly being bombarded. The fighting continued day and night, so the children couldn't escape. They were actually almost dying of cold, humidity, and hunger. The brother, the small kid, he had put all his clothes on his younger sister and was almost close to freezing to death. At that moment, Cyril assumed a physical form and approached them. At first, the children were frightened, but Cyril convinced them that he was there to help them. Cyril first provided them warmth and strength, and then fed them bread and sauce from the shell of a dead soldier nearby. When the children regained some strength, Cyril entered his astral body, flew, and took them behind the captured soldier, which was basically a safe zone. This safe zone was guarded by the French soldiers. The soldiers took these brother and sister to the hospital nurses, who looked after them, provided them warm clothes, fed them, and put them to sleep. Some kind people took charge of their care, even their own relatives had been killed. So Cyril was a child in his earthly life, but he possessed a strong sense of service and virtuous conduct, making him a good member of the invisible helpers. Cyril discovered another way to be useful by influencing sailors to protect ships from landmines. Once, a ship's captain had to avoid a mine. He was an extremely experienced and skilled man, and it was difficult to divert him from his course. But at that particular time, their ship was very close to a mine. And had it touched the mine, there would have been an explosion and everybody would have had died. Cyril made a huge shove and turned the wheel himself. When the man saw the shove, he was frightened. He ran. There was a moment of confusion, but somehow the ship came out of the trouble. Then after some time, the captain, the sailor, he returned. He told the people that he had seen a small white hand holding the wheel, and they laughed at him. So once a man was also prevented from committing
suicide by these invisible helpers. A young invisible helper was circling over Bay of Bengal. He spotted a ship and saw a dark grey cloud of deep sadness surrounding a closed room. Upon entering the room, he saw a ship's officer contemplating suicide, holding a pistol. The officer, a very intelligent and respected man, was contemplating this because after falling in love with a woman, he embezzled money from the accounts and gave her valuable gifts. He lacked the courage to face the disgrace that would follow. He had an elderly mother at home whom he loved the most. So, this invisible helper began to instill in him the idea that his murder, his, his own suicide would actually incite his mother's anger, and she would be drowned in the sea of sorrow. She would. So basically, they also instilled thoughts in this officer to go and confess what had happened in front of the captain, the ship's captain. So this invisible helper also arranged for the captain to be awake. The officer explained everything to him, the captain, within half an hour. The captain was a very kind man and paid the embezzlement fee himself, while the officer later repaid the same to the captain in easy installments. Thus, the life of a promising ship's officer was saved. There is one night, now here C.W. Leadbeater says that he was passing through a hilly and picturesque part of the country, attending to usual affairs. A child assistant who had saved the life of ship's officer a few days before came running and said that he had detected something wrong. A child was dying underground. Upon searching, an 8-year-old boy they came to know that 8-year boy had wandered into a large dark cave that was nearly dying of hunger, thirst, and despair. The child helper assumed a physical form here because the extreme darkness, he had to arrange for a light. So with a bright lantern in hand, a boy bent down and awakened the semi-conscious boy. Clearly, the primary need at this time was water. A stream was nearby, but the frail boy couldn't reach it. So this boy, he arranged for a cup, and he could have made one, but he brought water in his palms. This revived the boy enough to sit up. Similarly, after giving him little water twice, he was able to help him in that way. He told that he lived in the next valley. He told the boy. The helper also assisted the boy. He went to look, but there was nothing in sight. There was nobody to help around. So they also tried to figure out where he came from, the house where he belonged, and through that they were that in mind. They found the house where his father was also searching for this missing boy at a distance. There were many people there. So they also, that way, they tried to instill a thought about the plight of the child, but in those people's mind, but they failed.
they were too worried about the child being lost and were searching for him. They had even called people from the nearby valleys to search thoroughly. Perhaps because they were too preoccupied with all these thoughts, they were not able to grasp the thoughts of these invisible helpers. So then what they did was they instilled the thoughts in the dog who was helping in that operation. And that's how they could direct the whole group to a place from where the child could be rescued out of the cave and brought to a higher place. And somehow these people could be they were made accessible to the child there so that they could again reunite. So these were a couple of examples where the invisible helpers really helped so many people, and that's how these help keeps on happening, or we feel this even when we visit Adyar, we can feel that presence. So this is about the whole thing, that the helpers intervene in times of crisis, accidents, illness, emotional despair. They guide souls at the moment of death, easing the transition to even an afterlife. They inspire moral courage, creativity, and compassion in daily life. Yes. So that's all from my side. Thank you, sir. Thank you so much. It was wonderful. This was your first recitation. It was really wonderful. Yes, अर्चना जी, आप दूसरे भाग की ओर अग्रसर हो. धन्यवाद. जी, थैंक यू सारंग जी और रमेश जी। और अब अभी तक हम लोगों ने जो भी कहानियां देखी थी, उसमें जो लोग थे वो पृथ्वी लोक पर जीवित थे और उनकी मदद की गई। पर कई बार ऐसा होता है कि जब भूवर लोक में व्यक्ति पहुंचता है, वहां वो बहुत परेशान होता है अपनी मृत्यु के बाद, तो उनको कैसे हेल्प पहुंचाई गई, उससे रिलेटेड दो छोटी कहानियां हैं। कि एक दिन क्या हुआ कि एक मृत फौजी अफसर था, उसको मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि एक फौजी अफसर था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास कुछ संपत्ति थी, कुछ धन था, जिसकी कि वो वसीयत करना चाहता था। उसकी माँ कुछ समय से आग्रह कर रही थी कि वह एक धनी युवा महिला से विवाह कर ले, पर उसे विशेष प्रेम नहीं था। बात टालने के लिए वो फौज में भर्ती हो गया। युद्ध में उसे बहुत गहरी चोट लगी। स्वास्थ्य लाभ करते समय उसका प्रेम एक फ्रांसीसी महिला से हो गया। फ्रांसीसी कानून के अनुसार उसने नर्स से विवाह भी कर लिया, पर माँ के क्रोधित हो जाने के भय से उसने ये सूचना माँ को नहीं दी, क्योंकि उसे विदेशियों से घृणा थी। उसने सोचा कि युद्ध के बाद वह घर जाकर माँ को समझा लेगा, और यदि तब तक उसके पुत्र हो गया तो क्रोध और शांत हो जाएगा। पर मृत्यु ने उसकी योजना ही विफल कर दी। वह एक सिपाही को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, पर वे दोनों ही बहुत घायल हो चुके थे और बड़े कष्ट से घिसटकर एक ओर आ सके। मरने से पूर्व उसने वसीयत लिखने का प्रयत्न किया। उसके पास पेन था, पर पत्नी को लिखे पत्र के अलावा उसके पास और कोई कागज नहीं था। उसने अंतिम कोरे पृष्ठ पर जैसे बना वैसे वसीयत लिखी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु बहुत निकट है। उसने तो हस्ताक्षर कर दिए और गवाही के लिए अपने साथी सिपाही से कहा। वह अपने नाम के एक दो अक्षर ही लिख पाया कि पेन हाथ से गिर गया और अफसर और सिपाही दोनों की मृत्यु हो गई। अदृश्य सहायकों ने उसे यह समझाकर शांत करने का प्रयत्न किया भूवर लोक में कि जब लोग शव को दफनाने उसके आएंगे तो उन्हें वसीयत मिल जाएगी। और उस मृत फौजी को यह शंका थी कि उसके घायल होकर गिरने की जगह एक दूर कोने में थी, जहां कदाचित ही कोई आए, फिर वर्षा में लिखा हुआ मिट ना जाए, तथा उसके अन्य सामान के साथ यह वसीयत कहीं उसकी माँ के पास न भेज दी जाए। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसकी चिंता यही थी कि यदि उसकी संतान पुत्र हुई तो संपत्ति पे उसका अधिकार किस प्रकार सिद्ध किया जा सकेगा। विचार भेजने पास ही में उसका एक मित्र था, जिसके पास ये हुआ कि उसको विचार भेज करके उसको प्रेरित किया जाए कि उसका मित्र उसके शव के पास पहुंचे। पर हुआ ये कि वो जो मित्र था उसका वो बहुत कठोर था, कहना चाहिए कि वो रिसेप्टिव नहीं था, वो नहीं भी उसने विचार तरंगों को ग्रहण किया। तो फिर स्थूल रूप धारण करके
उसके सामने आया गया और उसको उसके मित्र के शव के पास जाने को प्रेरित किया। ये उसके मित्र की तस्वीर है जिसको बार बार भेजी जा रहे थे विचार, पर उसने ग्रहण नहीं किए। फिर उसको शव के पास ले जाने को प्रेरित किया, वहां वसीयत मिली, उसे वकील को दे दिया गया। इस प्रकार उस अफसर की इच्छा पूरी हुई और उसने भूवर लोकों में अपने आगे की यात्रा की। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि व्यक्ति मर के मृत्यु हो गई उसकी, पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाता, कभी ऋण नहीं चुका पाता, कभी अपने स्त्री बच्चों की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाता और शरीर छोड़ देता है। ऐसे मामलों में प्रायः यह आवश्यक होता है कि जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर ऊपर के खंडों में जाए तो वहां शांति से जाए और आगे के लोगों की यात्रा करे। इसके एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगी इसको, कि एक मरे हुए गरीब आदमी की सहायता करने का प्रयत्न इनविजिबल हेल्पर्स ने किया। उसका मन दुनिया की बातों से हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे अपने 2 छोटे बच्चों की चिंता थी जो निराश्रित रह गए थे। वह गरीब था और उसके लिए उनके लिए कुछ भी नहीं बचा पाया था। उसकी अपनी स्त्री 2 वर्ष पहले मर चुकी थी। उसकी मकान मालकिन बहुत सहृदय थी, बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर वह बेचारी स्वयं इतनी गरीब थी कि बच्चों को पाल नहीं सकती थी। इसलिए उसने उन्हें अनाथालय भेजने का निश्चय किया। अब ये मृत व्यक्ति भूवर लोकों में बहुत दुखी था, ना तो मकान मालकिन को दोष दे सकता था, ना उपाय बता सकता था। तो हमारे ये सदृश सहायक ने उससे पूछा, क्या उसका कोई ऐसा संबंधी है जिसे बच्चों को सौंपा जा सके? उसने बताया कि उसका एक छोटा भाई है जो शायद सहायता कर सके, पर 15 वर्ष से उसका कुछ भी पता न था। पता नहीं वो जीवित भी है कि मर गया। तो बाद में ये पता लगा, उसको बस इतना पता था कि उसका भाई एक गांव में बढ़ई का काम करता है। यह सूचना अत्यंत ही अपर्याप्त थी, पर क्योंकि बच्चों के लिए कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था तो उसने प्रयत्न किया। उस मृत व्यक्ति को लेके इस अदृश्य सहायक ने उसके भाई की बड़ी खोज की, बहुत परिश्रम किया, तब पता लगा कि वो अब बढ़ई की दुकान का मालिक है। उसका धंधा अच्छा चल रहा है, वह विवाहित है, पर उसकी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह बहुत लालायित था। अतः यह व्यक्ति इस संकट की अवस्था में बहुत उपयुक्त जान पड़ा। अब प्रश्न यह था कि इस भाई के पास सूचना कैसे पहुंचाई जाए। तो बार बार स्वप्न में उसके भाई की मृत्यु, बच्चों की दुर्दशा तथा मकान मालकिन का नाम और पता बताया गया। बार बार के स्वप्न से उसके मन पर असर पड़ा। अपनी पत्नी से उसने इसकी चर्चा की, जिसने उसे इस पते पर पत्र लिखकर हाल जानने की सलाह दी। उसे ये पसंद ना आई, क्योंकि वह स्वयं वहां जाकर पता लगाना चाहता था। पर यह सोचकर कि स्वप्न की बात सच हो कि ना हो, उसने सोचा अपने एक दिन के कार्य का नुकसान क्यों किया जाए। जब ये युक्ति भी असफल हुई तो इस सदृश सहायक ने उस व्यक्ति को एक पत्र लिखा, जिसमें वही सब वर्णन किया गया था जो उसने स्वप्न में देखा था। जब उसने पत्र देखा तो उसे विश्वास हो गया, उसका संदेह दूर हो गया। वो पहुंचा वहां उसी पते पर। वहां उदार मना मकान मालकिन ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। सहायकों के लिए उसने मन में यह विचार उत्पन्न करना बहुत आसान था कि वह कुछ दिन बच्चों का उचित प्रबंध होने तक अपने पास रखे। मकान मालकिन ने अपने पास बच्चे रखे। बाद में बढ़ई आकर के बच्चों को ले गया और उन्हें अच्छी तरह से रखा। तब इस मृत व्यक्ति की चिंता दूर हुई और इसने भूवर लोकों में अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। इन सच्ची कहानियों के पश्चात हमें इस महान सत्य को समझने का प्रयत्न करना होगा कि यह शरीर हमारा केवल आत्मा का कपड़ा या आवरण है। मरने पर हम उसे छोड़ देते हैं, सोने पर हम उसे केवल कुछ समय के लिए त्यागते हैं। कुछ लोग अपना जीवन पवित्रता, प्रेम, सदाचार और सद्भावना से जीते हैं, दिन में सभी के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। वो अपने निद्रा काल में भी अदृश्य सहायकों की तरह काम करते हैं। यह हो सकता है कि जागने पर उन्हें कुछ भी ना याद रहे, पर जिन्होंने साधना और ध्यान करके यह योग्यता अर्जित कर ली है, वे पृथ्वी लोक और भूवर लोक के बीच संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उन्हें सब कुछ याद रहता है। मैम आप म्यूट हैं। अर्चना जी आप म्यूट हैं। एक आम व्यक्ति जो संसार और यहाँ के पदार्थों में गहरी आसक्ति रखता है, उसे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर, गाड़ी, बंगला, आलोचना और ईर्ष्या घेरे रहती है। उसकी एस्ट्रल बॉडी भी उसके शरीर से सोते समय निकलती है।
कोई भी असामान्य दृष्टि रखने वाला यह देख सकता है कि ऐसे व्यक्ति की एस्ट्रल बॉडी एक अस्पष्ट सी आकृति धुंधले बादल की तरह उसके शरीर के पास ही मंडराती रहती है। यदि उसकी एस्ट्रल बॉडी को उसके पास से हटाने का प्रयत्न किया जाए तो उसे असीम कष्ट होता है और वह जग जाता है। पर जैसे जैसे व्यक्ति उन्नति करता जाता है उसकी एस्ट्रल बॉडी क्लीन होती जाती है और वह कहीं भी आ जा सकती है। यद्यपि उसका शरीर सोया पड़ा रहेगा पर उसकी चेतना एस्ट्रल बॉडी में जगी रहती है और वह सहायता का कार्य कर सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि मान लीजिए कि व्यक्ति सोते समय में भूवरलोक में पूर्ण सचेतन है और स्वतंत्रता पूर्वक चाहे जहां आ जा सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अदृश्य सहायकों के दल में सम्मिलित हो सकता है। इस अवस्था में अधिकांश व्यक्ति अपने ही विचारों में मगन रहते हैं पर उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर हर एक को इस तरह से अदृश्य सहायकों की सहायता मिल जाती तो फिर मृत्यु हो ही क्यों, किसी को कष्ट मिले ही क्यों। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि कई बार विपत्ति कर्म फल के कारण आती है और टाली नहीं जा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार की सहायता नहीं की जा सकती। हो सकता है मरना लोगों के भाग्य में बंधा है और उन्हें मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता, जैसे तूफान के समय किसी जहाज का सागर में डूबना, या आग लगने पर किसी नगर का विनाश होना, या कोरोना जैसी महामारी में लोगों का सामूहिक रूप से मरना, हवाई जहाज का क्रैश होना। ऐसे में अदृश्य सहायक मरने वाले के मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिससे आघात लगने पर वे कम विचलित हों और शरीर छोड़ने के उपरांत भूवर लोक में उनको हर प्रकार से मदद की जा सकती है। इस बात से यह सामने आता है कि मरते वक्त मन का शांत होना बहुत आवश्यक है ताकि आगे के लोगों में यात्रा सुगम हो सके। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ऐसा ही एक कार्य किया और उसी से संबंधित यह कहानी है कि एक बार एक जहाज भयंकर तूफान में डूब रहा था। वो एक कोठरी में गई जहां एस्ट्रल बॉडी में लगभग वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से एक कोठरी में गई। अभी ये शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। जब एनी बेसेंट जी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहाज की एक कोठरी में 1 दर्जन स्त्रियां थीं। ऐसे एनी बेसेंट जी ने उन्हें भय से दयनीय दशा में रोते, सिसकते और चिल्लाते पाया। जहाज को तो डूबना ही था, कोई सहायता बचाने के लिए संभव नहीं थी। ऐसी भयभीत और विदारक स्थिति में पृथ्वी छोड़कर दूसरे लोक में प्रवेश करना सबसे खराब स्थिति होती है। उन स्त्रियों को शांत करने के लिए उन्होंने स्थूल रूप धारण किया। वे बेचारी स्त्रियां उन्हें कोई स्वर्ग का दूत समझकर रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। एक बेचारी माँ ने अपनी बेटी को उन्हें सौंपा और प्रार्थना की कि कम से कम वो उसकी बेटी को बचा ले। बातें करने पर वे सब शांत हो गईं। बच्चा सो गया और वे सब भी शांति पूर्वक सो गईं। डॉक्टर एनी बेसेंट ने उनके मन में स्वर्ग के विचार भर दिए। जहाज डूबने तक वे सोती रहीं और डॉक्टर एनी बेसेंट अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ ही उनके साथ डूब गईं ताकि उन्हें विश्वास दिला सके कि वो उनके साथ हैं। इस प्रकार उन सभी स्त्रियों की मृत्यु निद्रा काल में हुई। उन सभी को शांति से मरने का लाभ यह मिला कि भूवर लोक में उनका स्वागत डॉक्टर एनी बेसेंट ने ही किया, जिनके प्रति उनका पहले से ही प्रेम और विश्वास पैदा हो चुका था। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और इस नए लोक में उन्हें अपना जीवन कैसे व्यवस्थित करना है इस विषय में बताया। अब एक बात और अधिक इम्पोर्टेंट है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति बहुत भयभीत है या नशे में है तो अदृश्य सहायकों द्वारा मिली सहायता के प्रति वे रिसेप्टिव नहीं होते और सहायता व्यर्थ हो जाती है। आचार्य राम शर्मा जी, देवराहा बाबा जी, नीम करौरी बाबा जी, शिरडी के साईं बाबा, योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, युक्तेश्वर महाराज, महाअवतार बाबा जी आदि महान संतों की भी कई सच्ची कहानियां प्रचलित है जिसमें उन्होंने अपने स्थूल शरीर को एक जगह रखकर दूर कहीं बहुत सी सहायताएं की और एक ही समय में उनको 2 जगहों पर देखा गया। बहुत सी कहानियां जिनकी चर्चा अभी मैं इस वक्त यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि लगभग सभी की जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां अप्रत्याशित रूप से कोई दुर्घटना होने से बचा ली गई होगी। ऐसे में हमें उन अदृश्य सहायकों का धन्यवाद देना चाहिए। थियोसॉफी की मान्यता है
कि इस प्रकार की विशेष सहायता मनुष्य को तभी मिलेगी जब कर्म फल के अनुसार वह उसका अधिकारी होगा। और इन बातों के साथ ही मैं अपनी बात पूर्ण करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी, बहुत ही शानदार आपने हर चीज यहाँ प्रस्तुत की है और मेरे ख्याल से ये लंबे समय तक ये मीटिंग हम सबको याद रहेगी। तो थैंक यू मैं तरल जी। जी जी जी, समय को बचाते हुए रमेश जी प्लीज गो अहेड, मैं स्टोरी शेयर कर। थैंक यू जी। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट। પાર્ટ 2 શરૂ કરીએ છીએ. ફૌજી અફસરનું વસિયતનામું. કેટલાક દિવસ પછી એ જ સહાયક એક બીજી ઘટના જણાવે છે. એક મૃત ફૌજી અફસર પોતાની સંપત્તિની વ્યવસ્થા માટે ચિંતિત હતા. તેની સ્થાવર મિલકત ને ધન એની બાબતમાં વસિયત બનાવવાનું હતું, પણ તે કરી નહોતા શક્યા. એની માતા કેટલાક સમયથી એને એક ધનવાન યુવા મહિલા સાથે લગ્ન માટે સમજાવી રહી હતી, પણ તેને તે માટે પ્રેમ ન હતો અને તે વાત ટાળવો એ પણ એને પ્રશ્ન હતો. આથી એણે ફૌજને જોઈન્ટ કરી લીધું કે જેથી માતા એ પ્રમાણે પ્રયત્ન ન કરે. યુદ્ધમાં એ ખૂબ ઘાયલ થઈ જાય છે અને ત્યારે એની સેવા કરતી એક ફ્રાન્સીસી મહિલા સાથે તેને પ્રેમ થઈ ગયો. ફ્રાન્સીસી નિયમ પ્રમાણે એની સાથે એણે લગ્ન પણ કરી લીધા, પરંતુ માતાને ખબર ન આપી. એનું કારણ એ હતું કે એને વિદેશીઓ માટે ધૃણા હતી અને એને થયું કે જણાવીશ તો કદાચ એ પત્ની માટે ધૃણા બતાવે. એણે વિચારેલ કે ઘરે જઈને જણાવીશ અને જો પહેલા પુત્ર થઈ ગયો તો પછી એ શાંત થઈ જશે. પણ મૃત્યુએ એની આખી યોજનાને ઊંધી વાળી દીધી. એ પોતે લડાઈમાં ઘાયલ થયેલો છે. એની બાજુમાં પણ એક સિપાહી છે. તે ઘાયલ સિપાહીને મદદ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે, પણ બંને ખૂબ ઘાયલ હતા અને ઘસડાઈને બહુ નજીક આવે છે બંને જણ. હવે લગભગ મૃત્યુ નજીક હતું એટલે અફસરને થયું કે લાવ હું મારા ધન અને એ બધાને માટે વસિયતનામું બનાવી દઉં કે જેથી એ ઈચ્છતો હતો કે એને જે બાળક આવે એને મળે. એણે વસિયત લખવાનો વિચાર કર્યો, પણ તેની પાસે પત્નીને લખેલ કાગળ સિવાય કોઈ કાગળ ન હતો. એ કાગળનો છેલ્લો જે કોરો ભાગ હતો તેણે પત્રની અંતિમ કોપીમાં કાગળ પર લખ્યું અને પછી એની અંદર વસિયતનામામાં વિટનેસ પણ જોઈએ એટલે સાક્ષી તરીકે એણે પેલા ઘાયલ સિપાહીને વિનંતી કરી. ઘાયલ સિપાહીએ પેન લીધી અને કંઈક હજુ થોડું ઘણું લખ્યું ત્યાં તો એ પોતે પણ પેન પડી ગઈ અને એ પોતે પણ માર્યો ગયો. આ અફસર પણ માર્યો ગયો અને એટલે એ દુઃખી હતો કે હવે એના વસિયતનામાની વાત આગળ ચાલશે કે નહીં. કારણ કે એને ડાઉટ હતો કે લોકો આવશે, આટલે દૂર ખૂણા સુધી આવશે કે કેમ, આવશે તો પણ વસિયતનામું એમના હાથમાં આવશે કે કેમ. વચ્ચે વરસાદ આવ્યો તો વસિયતનામું કદાચ પલળી પણ જાય અને પત્ની ગર્ભવતી હતી એને એટલે એ ચિંતા હતી કે જો પુત્ર થાય તો પછી એ બધો પ્રશ્ન ઉકલી જઈ શકે અને આ વસિયતનામાથી એ પ્રશ્ન ઉકેલી શકાય. એવું જાણવા મળ્યું કે અધિકારીનો સહપાઠી પાસે રહે છે. હવે આ સહાયકે એને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, વિચાર સહાયકનો મોકલવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ આ સફળ ન થયો. સહાયકે આથી સ્થૂળ રૂપ ધારણ કર્યું અને અનેક કઠિનાઈઓ, કારણ કે એ વાતને સમજાવવાની હતી અને એના ભાઈને ખાસ જણાવવાની હતી. એટલે ગમે તેમ કરીને પણ જ્યારે એણે
આ સ્થૂળ રૂપમાં એના ભાઈને મળે છે અને જણાવે છે, અને મિત્રને તે અફસરના તરફ જવા પ્રેરિત કર્યો. વસિયત મળે છે અને એ વસિયત લઈને એ વકીલને આપે છે. વકીલ આ પ્રમાણે તે ઈચ્છા પૂર્ણ કરીને તેને તે વાતની અફસરને બહુ જ હવે શાંતિ થઈ ગઈ કે એનું જે કાર્ય હતું એ આ સહાયકની મદદથી પૂર્ણ થયું. ઘણી વખત મૃતકની ચિંતા તેને ભૂલોક તરફ ખેંચી લાવે છે. આવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ બને છે કે જેમાં મરતી સમયે કંઈક પરિસ્થિતિ એવી હોય કે જેથી એ પૂરતી રીતે વિચારોમાં જ ગૂંચાયેલો રહે અને શાંત ચિત્તે જે મૃત્યુ સ્વીકારવું જોઈએ તે ન સ્વીકારી શકે. પણ ઘણી વખત મૃતકની ચિંતા તેને ભૂલોક તરફ ખેંચી રાખે છે, કારણ કે એને પુત્ર પુત્રી પ્રોપર્ટી બધાની ચિંતા હોય. જેમ કે કર્તવ્ય પૂરું ન કરી શક્યો હોય, દેવું ચૂકવી ન શક્યો હોય, સ્ત્રી બાળકો માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા ન કરી શક્યો હોય, અને મૃતક ઉપરી આ બધા સાથે જે મૃતક ઉપરી ખંડોમાં શાંતિથી જાય તે માટે સહાયક તેના પ્રતિનિધિ બની તેના કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, જેથી એનું મન શાંત થાય ને એ આગળની જર્ની ચાલુ કરે. આવો એક ઉદાહરણ જોઈએ. એક સહાયક દળ એક મૃત વ્યક્તિની સહાયતા કરવા તેનું ધ્યાન તેના પુત્રો માટે પૂરતી વ્યવસ્થા ન કરી શક્યા તેમાં હતું. એ વ્યક્તિને મૃત્યુ સમય એમ થતું હતું કે એના પુત્રો અને પુત્રી માટે એ વ્યવસ્થા કરી ન શકે. આપ જોઈ શકો છો આના દ્રશ્યમાં, અને એના પુત્ર પુત્રી પણ ત્યાં બતાવ્યા છે. તે ગરીબ હતો, તેના માટે કંઈ બચાવી શકેલો નહીં. પત્ની પણ 2 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગઈ હતી. એની મકાન માલિક ખરેખર સહૃદયી હતી. એણે એના બાળકો માટે કંઈક કરવા માટે તૈયારી બતાવી હતી, પરંતુ તે પોતે જ ગરીબ હોવાથી બાળકોને પાલવી ન શકે એવું લાગવાથી એણે બાળકોને અનાથાશ્રમમાં મોકલવાનો વિચાર કર્યો. મૃત વ્યક્તિ આથી દુઃખી હતો, કારણ કે એના બાળકો અનાથાશ્રમમાં જાય. સહાયકોએ બીજી કોઈ મદદ કરી શકે તેવા વ્યક્તિની વાત પૂછી તો જાણવા મળ્યું કે એનો એક નાનો ભાઈ હતો. 9 વર્ષથી તેનો પત્તો જ નહીં હતો. એટલે હવે એને શોધવો કઈ રીતે, એક પ્રશ્ન હતો. પણ ત્યાં એક સમાચાર મળ્યા કે કોઈ ગામમાં મીઠાઈનું કામ શીખી રહ્યો હતો. અધૂરી વિગતો છતાં પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યા. એને મેસેજ મોકલવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, અને ખૂબ પરિશ્રમ પછી ખબર પડી કે એ ભાઈ છે એનો, એ મીઠાઈની દુકાનનો માલિક જ બની ગયો હતો. ધંધો સારો ચાલી રહ્યો હતો, પૈસા પણ સરસ મળ્યા હતા, એણે લગ્ન પણ કરી લીધા હતા. બસ એક જ વાતની ખોટ હતી, એને બાળક ન હતા. તે ભાઈને સૂચના મોકલવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેથી તેને ભાઈનું મૃત્યુ, બાળકોની દુર્દશા, મકાન માલિકનો પત્તો આ બધું જણાવી શકાય. આ જાતનો જે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો તે પેલી વ્યક્તિએ સ્વીકાર્યો નહીં, કારણ કે એ ખૂબ ઊંઘમાં હશે, અથવા તો એ જાતની પરિસ્થિતિમાં ના હોય કે એ સ્વીકારી શકે. પછી વારંવાર સ્વપ્નો આવવા માંડ્યા, અને આ સ્વપ્નો આવ્યા એટલે એને થયું કે આ શું છે. એને એની પત્નીને પૂછ્યું. પત્નીએ કહ્યું કે તમે જઈને તપાસ કરો, એને સ્વપ્નની વાત સાચી છે કે કેમ એ જોવા માટે વિચાર્યું. પણ એને થયું કે એક દિવસનો ભોગ આપવો, ધંધામાં પ્રોબ્લેમ થાય એવું વિચારીને એ અટકી ગયો. આ યુક્તિ પણ અસફળ થઈ. એટલે હવે એક જ રસ્તો રહ્યો કે એને સ્પષ્ટ જણાવવું. એટલે આ સહાયકોએ એને એક પત્ર દ્વારા સ્વપ્નની વાત જણાવી. અને જ્યારે પત્ર વાંચ્યો ત્યારે એ ભાઈને એકદમ આશ્ચર્ય થયું કે અરે, જે સ્વપ્નમાં હતું એ તો સાચું જ છે. ખરેખર એ સાચું છે કે નહીં જોવાની જરૂરત જ નથી. અને તેનો સંદેહ દૂર થતા બતાવેલ સ્થાન તરફ ચાલી નીકળ્યું. મકાન માલિકે એનું ઉચિત સન્માન કર્યું
સહાયકોએ મકાન માલિકને થોડો સમય એ બાળકો રાખવાની વ્યવસ્થા કરવાનું વિચાર્યું કે જેથી એમના ભાઈ બધી વ્યવસ્થા કરીને આવી શકે. અને ત્યાર પછી એમના ભાઈ આવ્યા અને બાળકોને લઈ ગયા અને સારી રીતે રાખવાનો પ્રયત્ન થયો. એટલે પેલા જે મૃતક વ્યક્તિ હતી એની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ અને પ્રસન્નતાપૂર્વક એના આગળની જર્ની, ભુવરલોકની જર્ની તરફ આગળ વધવા માંડ્યું. આવી સાચી વાતો પરથી આપણે એક મહાન સત્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે કે શરીર માત્ર આત્માનું કપડું કે આવરણ છે. મરણ પછી છોડી દઈએ છીએ. શયન દરમિયાન પણ ટૂંક સમય માટે આપણે છોડી દઈએ છીએ. જે લોકો જીવન પવિત્રતા, પ્રેમ, સદાચાર અને સદભાવનાઓથી જીવે છે તે દિવસે પણ બધાના કલ્યાણના કાર્ય કરતા રહે છે. તેઓ નિંદ્રા કાળમાં પણ અદ્રશ્ય સહાયકોની માફક કાર્ય કરે છે, ભલે તેમને યાદ ન રહે. પણ જેમણે સાધના અને ધ્યાનથી યોગ્યતા મેળવી લીધી છે તેઓ પૃથ્વી લોકને ભુવરલોક વચ્ચે સંપર્ક સ્થાપિત કરી શકે છે અને તેમને બધું યાદ પણ રહે છે. એક આમ આદમી સંસારને પદાર્થોમાં ઊંડી આસક્તિ રાખે છે અને તેમની એસ્ટ્રલ બોડી પણ સૂતા સમયે નીકળે છે. અસામાન્ય દ્રષ્ટિવાળા જોઈ શકે છે કે તેની એસ્ટ્રલ બોડી અસ્પષ્ટ આકૃતિ અને ધૂંધળા વાદળની માફક દેખાતી હોય છે. શરીર પાસે મંડળાતી રહે છે. તેને હટાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એને ઘણું કષ્ટ પડે છે અથવા તો તે વ્યક્તિ જાગી જાય છે. પ્રયત્નો કરતા રહેવાથી અને એની અંદર વળગી રહેવાથી એ એસ્ટ્રલ બોડી ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ થતી જાય છે અને સહાયતાનું કાર્ય કરી શકે છે. આનો અર્થ એવો નથી કે અદ્રશ્ય સહાયકોના દળમાં જોડાઈ જાય, પણ અધિકાંશ તે પોતાના વિચારોમાં જ મગ્ન રહે છે. કેટલીક વખત કર્મફળના કારણે વિપત્તિ આવે છે જેને ટાળી શકાતી નથી, પરંતુ તેને સહાયતા જરૂર કરી શકે. ભાગ્યમાં તો મૃત્યુ લખેલો હોય તો બચાવી ન શકો, પણ સહાયકોને વ્યક્તિઓને મૃત્યુના વાદળમાંથી, આઘાતમાંથી ઉગારી શકે છે. ડોક્ટર એની બેસન્ટે પણ આ કાર્ય કર્યું છે, જેથી મૃત્યુ સમયે જો શાંત સ્થિતિમાં મૃત્યુ પામવામાં આવે તો એની ગતિ બહુ સુંદર થાય છે. એ વાતને સમજાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે અને ખરેખર એમણે પોતે એક બનાવમાં પોતે ભાગ ભજવીને પણ આ વાત સાબિત કરી. એકવાર એક જહાજ ભયંકર તુફાનમાં ડૂબી રહ્યું હતું. એની બેસન્ટ એક રૂમમાં ગયા, કારણ કે તે વખતે એસ્ટ્રલ બોડીમાં હતા અને રૂમમાં જઈને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો 1 ડઝન સ્ત્રીઓ દર્દની દશામાં રડતી અને બૂમો પાડતી હતી, કારણ કે એમને લાગ્યું કે હવે એ લોકો બચી નહીં શકે. અને આ જાતના એકદમ ગભરાટ અને બૂમો પાડતા જોઈને એની સહાય કરવા માટે જાય છે. સહાયતાની કોઈ સંભાવના ન હતી, કારણ કે એ લોકો એટલા બધા પોતે દર્દમાં હતા. આવી દશામાં પૃથ્વી લોક છોડી બીજા લોકમાં પ્રવેશ સૌથી ખરાબ સ્થિતિ છે. એમની ઈચ્છા હતી કે આ લોકો શાંત થાય અને ભલે મૃત્યુ તો છે જ, પણ શાંત રીતે જાય તો એમની પાછળની અથવા તો ત્યાર પછીની જર્ની સુંદર રીતે કરી શકે. સ્ત્રીઓને શાંત કરવા એમણે સ્થૂળ રૂપ ધારણ કર્યું. એટલે સ્ત્રીઓએ તો એ સમયે આવેલા જોઈને સ્ત્રીઓએ તેમને સ્વર્ગદૂત સમજી રક્ષા કરવા માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. એક સ્ત્રીએ તો પોતાનું બાળક સાંપીને બચાવી લેવા જણાવ્યું. વાતોમાં બધી સ્ત્રીઓને એમણે સમજાવી અને બધી સ્ત્રીઓ શાંત થઈ અને સૂઈ ગઈ. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે એમણે કેવું એ ડોક્ટર એની બેસન્ટે બધાના મગજમાં સ્વર્ગના વિચારો ભરી દીધા. જહાજ સામે બધા ડૂબી ગયા અને એની બેસન્ટનું એસ્ટ્રલ બોડી પણ એમણે ડૂબાડી દીધું કે જેથી એ લોકોને એવું લાગે કે એ ખરેખર એમની સાથે જ હતા. બધી સ્ત્રીઓનું મૃત્યુ નિદ્રાકાળમાં થયું, મૃત્યુ શાંત અવસ્થામાં થયું અને ભુવરલોકમાં તેમનું સ્વાગત ડોક્ટર એની બેસન્ટે જ કર્યું. નવા લોકમાં કેવી રીતે રહેવું
કઈ રીતે એડજસ્ટ થવું, કઈ રીતે વાતાવરણને એ કરવું, એ બધું એમને સમજાવ્યું. મૃત્યુ સમયે વ્યક્તિ ભયભીત હોય કે નશામાં હોય તો એને સહાય માટે સ્વસ્થ નથી હોતા અને સહાયતા વ્યર્થ જાય છે. એટલે મૃત્યુ સમયે તમારે ભયભીત ન રહેવું જોઈએ અને નશામાં ન હોવા જોઈએ. તો સહાયકો તમને જરૂર સહાય કરી શકે. આચાર્ય રામ શર્માજી, દેવહર બાબા, નીમકરોલી બાબા, શિરડી સાંઈ બાબા, યોગાનંદજી, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, આવા અનેક સંતોની સાચી કહાણીઓ પ્રચલિત છે, જેમાં સ્થૂળ શરીર એક જગ્યાએ રાખી ઘણા દૂર સુધી એમણે મદદ કરી હોય. હું માનું છું કે બધાના જીવનમાં એવી ઘટનાઓ બની જ હશે કે જેમાં અપ્રત્યાશિત રૂપે કોઈ ને કોઈ દુર્ઘટનામાંથી બચાવી લીધા હોય. આવી વાતોમાં અદ્રશ્ય સહાયકોનો આપણે આભાર માનવો જ રહ્યો. થિયોસોફીની માન્યતા મુજબ આથી વિશેષ સહાય તેને જ મળે છે કે જે કર્મફળ અનુસાર અધિકારી હોય. થેન્ક યુ. बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और सारंग जी, आपका स्वागत है। इंग्लिश में आप ये दो बची हुई कहानियां पूर्ण कीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर के दौर पे चलेंगे। धन्यवाद। So friends, we'll quickly go through the stories narrated in English now. The first story, this is the helpers. They just don't help here in this physical world, but they offer help even in the Bhuvar Lok or the astral plane, which becomes more accessible and we become conscious of it after death or during sleep. So a few we'll narrate 3 such examples. The first is of an officer who died in a war, and his mother had tried to fix his marriage with a girl of her choice who was from the same ethnicity, nationality. Somehow he did not like the girl much. So he kept on avoiding the topic of getting married and to her, and he joined army. So when he joined army, he also got injured, and that's when a French nurse treated him, and he fell in love with that particular nurse. He got married to her, but he was also aware of his mother's strong hatred towards foreigners or people who are not from her ethnicity, and that's why I kept this as a secret. So he had to go on a war. In between, they started their family life, and he was expecting their baby. But somehow, during that period before the child was born, he had to go on a war. And before he went, he drafted a will, and he used one of his companion officers as a witness to that for the authenticity of the will. So that even suppose if he passes over or he dies in the war, his would-be child would lead life in a little comfort and would not have to struggle financially. So, but unfortunately, it so happened that even he died in that war, and he was constantly brooding over the thought of how could he be of help to his child who is yet to born, because his mother still did not know about his marriage to this foreigner, nor did she know that his wife was carrying their baby. So although he had
resources or wealth to help his son grow, but the lack of communication was his, or the barrier to this communication or the flow of communication was a major barrier. With the help of these, basically through the invisible help, he tried to convey it to his wife that his will is kept in such and such place so that the wife could find it. He instilled the thoughts to a friend who could be of help, and who could help seek a lawyer's intervention in getting the will implemented. And somehow it could be figured well, and it set the right tone in the realization of his will and his desire to help his child who would be born soon. So the second case was also of a man who died without, and he was constantly in a state of worry for not being a good father, because he couldn't provide for his children. And this next slide, the next story. He had two children and he was always repenting for not being able to provide well for them. He was trying to seek this invisible help through, although he was dead, he was in the astral sphere. How could he be of help to his children? And that's when he found out that an old lady could be of help, and he had a landlord who was a nice man, and he tried to help the children as much as he could. There was a brother, a man who was doing well in his business, but he did not have family or children. So he could instill thoughts in this young successful businessman, the sweet mart owner or the sweet shop seller, that he could enrich his life by adopting or providing for those children, and meanwhile the children would also find sustenance and fatherly help from them. And that's how, with instilling those thoughts, he could get them both together, and that's how his desire of that the man who had departed could be ascertained. The third case was when a group of women who were on a voyage or traveling were held by any patient, that they passed over to the other realm, the death realm, in their sleep, and they weren't tortured enough. So they could pass on the other side peacefully. These were the two incidents shared. So thank you so much. Thank you very much. Really, it was wonderful. It seemed like a journey through so many lives, and especially those, I think, Archana ji created wonderful pictures, and which helped the emotion of the story to go within us. बहुत ही बढ़िया रहा. और अब मैं और कुछ ये कहना चाहता हूँ कि किसी को, आप में से ही किसी वक्ता को, any of the speakers, if you would like to add something to this invisible helpers from invisible world chapter, from your own knowledge or something which you would wish to add, you can add now. Archana ji. आई होप सो कि आप अर्चना पांडे से कह रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. इनको मैं हटा देता हूँ. तरल जी, ऐसा है ना कि इसमें बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकते हैं कि कैसे अदृश्य सहायक थॉट, विचार की तरंगे भेजकर दूसरों में जो वो मदद करना चाहते हैं पैदा करते हैं, या फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कैसे वो अदृश्य से स्थूल हो जाते हैं,
कैसे स्थूल से फिर वापस अदृश्य हो जाते हैं। जी उसके बाद ये अदृश्य जगत के सहायकों को सुनकर हर कोई एकदम से इंथुजियास्टिक हो जाता है कि क्या हम भी बन सकते हैं। तो हाँ, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इस पृथ्वी लोक पर रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, तब वो सोचे दृश्य सहायक बनने को। इस सब ये सब बातें भी हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब का जवाब इस वक्त तो नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए तो एक अलग लेक्चर की जरूरत जी पड़ेगी। बिल्कुल, और वो एक्चुअल आप ही ले रहे हैं, ऐसी मुझे आपसे गुजारिश है। जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर लूंगी। और ये अदृश्य सहायक पर जो किताब है CW लेडबीटर की, जी इसमें से मैंने कुछ कहानियां ली हैं, इसमें कई तरह की कहानियां और हैं, और साथ में इन्होंने इन बातों पर भी प्रकाश डाला है। तो कई बार हम लोगों ने जैसी एस्ट्रल बॉडीज इसमें बनाई है ChatGPT से या जेमिनी आई से, पर उसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रल बॉडीज ऐसी ही होती हैं। एस्ट्रल बॉडी थोड़ा डिफरेंट होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो उन पर भी बात की जा सकती है कि भूवर्लोक की में जो भूवर्लोकी शरीर है वो कैसे होते हैं और उनमें कैसे कैसे कलर्स होते हैं। वो डिपेंड करते हैं फीलिंग्स पर, उनके डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर, उनकी सोल के जो अच्छे गुण हैं उन पर। तो अभी बहुत सी चीजें हैं जो बाकी हैं इस पुस्तक में, जी उसको आगे के लेक्चर में कवर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सारंग जी, दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सच Uh, मीटिंग yes. एंड आई थिंक यू आर नॉट वेल ऑल्सो, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग लाइक समथिंग कवर्ड अप। And it's yeah, I'm not too well. There's also a little cold here, या so the campus is pretty cold. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस योर फर्स्ट It was wonderful because it also very much relates to my first experience at Adyar. ओके When I had actually entered Adyar campus at almost midnight, 12 o'clock, हम्म and that was my first visit. I had not been there before, and although I entered, and that's such a forest that any person, a normal person, would feel afraid. But trust me, I felt so secured, and through while studying this, as I mean, by from a student's perspective, when I read these incidents, I could totally relate to it as my own experience, because I felt that invisible help there in Adyar so strongly at that time, that at midnight I didn't feel afraid. Rather, I was feeling so secured, as if I'm in my mom's lap. क्या So बात, वाओ दैट वाज ग्रेट। यस रमेश जोलिया जी, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर कीजिए अगर इस सब्जेक्ट के बारे में। अनम्यूट अनम्यूट करिए सर। हाँ ऐसे बनाओ तो मुझे लगता है कि अगर कोई सोचे तो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई जगह बना हुआ ही होता है जहां जी तक जी आपको कोई हेल्प नहीं है, वहां तक कहीं से भी हेल्प आ जाती है और आपको रास्ता दिखाती है। ये एक भाई ये नर्मदा परिक्रमा में गए थे, तो उससे कहीं 10 किलोमीटर के राउंड में कोई भी व्यक्ति नहीं था, और कहीं से वो सोच रहा था कि अभी कहाँ जाना, क्योंकि वो तो गांव से जाना पड़ता है और कोई रास्ता बराबर नहीं होता है। तो उसको कहीं से भी एक इंसान आया, उसको बताया कि ये जगह से जाइए, आपकी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। और उसने आज तक मालूम नहीं पड़ता है कि वो आदमी आया कहाँ से। उसने बहुत लोगों को भी पूछा, वहां आगे रहने वाले को, तो वहाँ कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है बोलते हैं। तो ऐसे बनाव बनते हैं। पर मुझे ये भी लगता है कि ये अदृश्य सहायक की जो बात है, तो वो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम अदृश्य नहीं है तब भी क्यों नहीं हेल्प कर सकते हैं। तभी बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। और वो जो जिसको करोगे उसको तो हम इनविजिबल ही लगेंगे अनजाने हैं तो जी इसलिए उस पर से ये बात है कि जो जिसके पास कुछ भी ज्यादा है वो है, उसको औरों को हेल्प करना चाहिए। ज्ञान से भी हेल्प कर सकते हैं, जी धन से भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, और लाइन लगी हुई है लोगों की इस बार, ये इस बार विषय ही ऐसा है रोचक। उदय जी, आप आपके बाद देव। Yeah.
खूब खूब आभार, अभिनंदन तीनों वक्ताओं को। अर्चना पांडे को तो आज सुनना मिला, इसका टोन बड़ा अच्छा है। हमारे रमेश भाई भी बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। चारण भाई का काम टोन थोड़ा कम था। बात विषय की है तो थियोसॉफी में अदृश्य जगत की बात बहुत रोचक है। मेरे सहित कई सदस्य ऐसा होगा कि जिसने जिसने ये थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए थियोसॉफी में जुड़ा है। स्वामी सच्चिदानंद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पुरुष है। उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि थियोसॉफी भूत प्रेत में मानती है, तो उसने इसी बारे में लिखा है। तो इन दूसरे पुस्तक में ऐसा भी लिखा है कि भूत प्रेत मेरा सहायक था। मतलब थियोसॉफी ने अदृश्य शक्ति और अदृश्य सहायकों बारे में बहुत कुछ सोच लिखा है और बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। वहां तक कि एचपीवी ने जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन किया था, लिख रहा था, वो पूरा करने के लिए भी उसको अदृश्य सहायकों की शक्ति मिली। जब अपना गुरु जी की थियोसॉफी का गुरु की बात आती है कि भाई थियोसॉफी का गुरु कौन है, तो हम बोलते हैं महात्मा मौर्य, महात्मा केच, महात्मा रघुवंशी। तो वो सब हमारा अदृश्य सहायक महापुरुष है। तो इस स्थूल जगत से तो हमने देखा नहीं है। थियोसॉफी की यही रोचक बात है कि अदृश्य महापुरुष हो और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे संस्था में हमारे जैसे कई लोग जुड़े हैं। और जी उसने बहुत उदाहरण दिया, 6 से 8 उदाहरण दे के ये बात बहुत अच्छी तरह से आज समझाया गया। अद्वैत शंकराचार्य के जीवन में भी बात हुई थी कि मंडन मिश्र के साथ संवाद के समय उसने जी पर कराया प्रवेश करके संसार सुख का अनुभव किया था। जी तो जी ये अदृश्य शक्ति कहीं कहीं जगह पर है, लेकिन श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में छोटी सी लाइन है। तो जो हर बात में हमको ये समझना नहीं चाहिए कौन सी बात में वो सहायता मिल रही है, कौन सा अदृश्य सहायक को हम प्राप्त करना चाहिए। हमारी पात्रता होनी चाहिए जी और हमारी समझन होनी चाहिए, तो ये सब हम प्राप्त कर सकेंगे। वरना जी तो ऐसा कोई जो, हाँ, वो अंधश्रद्धा में हम जुड़ जाएंगे। तो ये जी बात जी थियोसॉफी हमको अच्छी तरह से समझाती है। आज का विषय बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत गूढ़ विषय है। और ज्यादातर संशोधन तो लेडबिटर साहब ने किया है, हिडन साइड ऑफ लॉज, हिडन साइड ऑफ मैसोनिक लॉज, हाँ सर, बहुत आज से हम इसी किताब के इनविजिबल बारे में बात। हेल्पर। जी हाँ, तो खूब खूब अभिनंदन तीनों वक्ताओं को और आभार सबका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। सभी वक्ताओं से निवेदन कि आज के विषय पर ही बोलें, तो संक्षिप्त में हम ज्यादा पहुंच पाएंगे। हाँ, यस देव जी, आप आपको ले लेते हैं, Thank बोलिए। you. Sure. Thank you so much. I just want to thank all the three speakers. My takeaway from today's teachings is that we should be, in order to be receptive, again, the importance goes to the karma and the stillness of mind. So the importance of karma and stillness of mind makes you receptive to these invisible masters helping you out. And what Ramesh Bhai said, very good thing. That is the ultimate takeaway for me, is that if we help others, then these invisible masters will also help us क्या बात more. So है, ओके, that is my takeaway from today. Thank you थैंक so यू much. एंड थैंक यू फॉर बीइंग ब्रीफ एंड स्वीट। बी देयर एंड लिसन टू ऑल अदर्स। यस प्रवीण भाई, एंड देन दुबाल जी। सर गुड इवनिंग। और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को छोटी छोटी बातें भी इनविजिबल हेल्पर हम लोगों को मदद करते हैं। जैसे आगरा लॉज थी, एक बिल्डिंग नहीं बन रही थी, कहाँ से पैसा आया और कैसे बन के बन गई। तो उस तरह की कई चीजें होती हैं छोटी छोटी। हम लोग परेशान हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और जैसे रास्ता बता दिया या हम लोगों की परेशानी दूर कर दी, हम लोग उन्हें थैंक यू भी नहीं कह पाए। तो ये सब चीजें रहती हैं। एक दफा मैं ट्रेन की पटरी पार कर रहा था, तो मेरा कैंची होती है वो दो ट्रेन के बीच में, मैं तेजी से बीच बीच में जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए अप डाउन करता था करीबन 100 किलोमीटर का। तो उसमें मेरा पैर फंस गया और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। तो मैं बड़ा परेशान, मतलब 30 सेकंड में मैं इतना परेशान हो गया। हालांकि ये सब गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जोश में मैंने ये कर दिया था। तो फिर लेकिन कई लोगों ने सरिया लेके आए और छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक ने हाथ डाल करके, एक लड़का आया वो हाथ डाल करके उसने किसी तरह से निकाला मेरा पैर, और फिर वो चला गया सेकेंडों में। तो ये सब जो कोई भी चीजें हैं, जैसे लॉज की हम लोगों की हेल्प आ रही है कि आप, कि कहाँ से आप कहीं फंक्शनिंग कोई अच्छे काम शुरुआत कर रहे हैं तो कहाँ से हेल्प आ रही है आपको पता ही नहीं है, ये कहाँ से हेल्प आ रही है वो तुरंत चली जा रही है और यूज हो जा रहा है कि आप तो सोच ही नहीं सकते, इतना कठिन कार्य था इतने आसानी तरीके से हो गया। तो ये सब चीजें रोजमर्रा के दिनों में हम लोगों की होती रहती है, लेकिन हम लोग उन्हें देख नहीं पाते। एक इंसाइट जरूरी है हम लोगों को कि ये सब चीजें देखने के लिए।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। वाह प्रवीण जी, आपने हमने कहानियां सुनी, आपने प्रत्यक्ष अपना उदाहरण देकर हमें इस विषय के ऊपर और ज्यादा बिलीव करने के लिए छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दुबाल जी, और फिर संदीप Yeah, जी, और the उसके बाद subject was very interesting today. It's a deep study on the invisible happenings in the world. In 2026, we live in a new layer of invisibility. The infosphere, the information age, like these data streams, millions of signals, Wi-Fi, 5G, satellite pings are passing through our body right now. Algorithms, invisible lines of code that determine what news you see, who you meet on dating apps, and how the global economy moves around. So this theosophical view is also that as above, so below. So only 1/7 of the world is visible through our physical eyes, but 6/7 of these things is all invisible. Etheric double, energy blueprint, astral body, emotions, and manas, mind, all are invisible. So the science is still far behind. If we see this invisible world, and the examples given are really impressive. We have learned a lot of things. Thanks to all the speakers today, and Taral Bhai for the subject which you have chosen today. Thank you. all Archana ji's selection. But yeah, it was a wonderful subject, और उनका तो हर चीज अर्चना जी जो प्रिपेयर करके लाती है बढ़िया रहता है। मुझे अभी भी याद है साउंड के ऊपर उनका लिया हुआ एक बहुत ही अच्छा त्रिवेणी का इसी तरह का मीटिंग है जो मैं शॉर्ट में टेलीकास्ट करूंगा। जी संदीप कुमार जी मिश्रा, शॉर्ट में आपको कुछ कहना हो तो बिल्कुल कहिए, उसके बाद हम सुनेंगे शिंदे जी और हर्षवर्धन जी। Thank you, all speakers. I don't want to give any comments Okay. because it is so much serious subjects. Okay. But I would like to add something here. Yes. थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ साइकिल रिसर्च सोसाइटी भी इस विषय पे बहुत शोध की है, और अपने पैरेलल ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के पैरेलल ही उसकी भी खोज चलती रही है इस विषय पे। जी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको yes, भी। जी शिंदे जी। Hello. Well, I must congratulate Archana Pandey. Very nice presentation. And with the PPTs which you have prepared, they are really very useful. And this session has become more interesting and we can say more exploration, stimulation. So invisible helpers is an attractive idea, no doubt. I say attractive idea because I personally was curious, know about them and explore about them more and more when I entered into the theosophy. Actually, myself being a biologist, I was more keen about the pineal gland, about which we don't think much. It is not just a physical organ, but it is a brain center that produces two important hormones like serotonin and melatonin, which at higher frequencies expand your perception. And when they expand your perception, when they get stimulated, it can help you to experience higher world in multidimensional way, which we call as the invisible world. And I found it is true for my experience in the sense they give guidance or messages through dreams or vision
You may say meaningful coincidence gives real solution sometimes. So we have studied in the science also Archimedes, when he said eureka, eureka, experience. Even structure of benzene, which they saw in dreams, even DNA coil, are all those examples, whether you believe it or not. But there are helpers and who give ideas. So you may call it as unseen support, encouragement without proof, but sudden comfort feeling of peace, or sudden ideas and gut feeling. These are definitely visible for us. So these helpers can be advanced spiritual beings, departed from physical bodies, some loved ones, and other non-physical entities dedicated like nature spirits, angels. So all they help in protection, healing, and guide as well. So for founding of the Theosophical Society, masters helped through materializing letters and instructions given. So HPB says, I am not the author of the secret doctrine or Isis-Christian build, but I was just a pen in their hand. So these are the very good findings of the Theosophical Society. And I found today they have dived deep into this subject. And Archana Pandey has explained very well. And I request Archana Pandey to give such talks so that people may get interested to explore more and more the world which is more invisible rather than what is visible. Like iceberg. The iceberg is visible up to top, but lot of thing is hidden. So that is what I want to add in it. I really congratulate all the three. Even that IT person who what he has experienced in Adyar. Sarang. What he has experienced in Adyar, it is quite true. He may again and again come and stay here. He may get more. Thank you very much for giving this, but it extended a lot. But Taralji, very good topic. This is very difficult topic, but it gives inspiration and insightful, we can say, drive to the people. And that you have given. Congratulate to you also for selecting. No, my thing is that Archana ji, after a very long period of time, when we met at Adyar, said that yes, now I will be doing some speech and all that, because she really prepares any subject she prepares it very well. So we are blessed that she is back and she will be more and more here with such presentations. Yes, Harshvardhan ji, you are the last one. Yes. Thank you, Sister Pandey ji. I congratulate you. Very well explained, and the subject is really wonderful. The stories that you narrated regarding the invisible helpers, and that is well explained by Leadbeater sir, and also propagated by Dr. Annie Besant in the Theosophical Society. Most of the time we are fascinated. We find that these invisible helpers only help us in the difficult times, but it's not like that. Difficulty is there. The life is itself very difficult span of life. So we understand that. But when we have the inspiration, when we go beyond this and we have a kind of capacity, and sometimes we feel helpless, that time you should feel that, oh, invisible helpers are there. Wordsworth wrote very nicely. He wrote, the melodies are sweet, but those unheard are sweeter. So sometimes unheard melodies are sweeter. So in this way, when we listen to certain things, we find all the anecdotes are there, certain symbological or certain stories which reflect this kind of invisibility, which is experienced by certain people. But that is the matter that becomes very uncommon.
And when it becomes uncommon, it means we have to have the bent of mind as a theosophist to look upon that in a serious way. It is not the superstition, and it is not the blind belief, but it is our confidence that we have to create. We have to strive hard, we have to go beyond that, and every day we have to do the practice in the way that we can feel that essence of invisibility. So what that invisibility is? It is the potentiality. It is the matrix of life that we have to understand. It is the real matrix. And in this way, what the matrix that nature responds in the way that as a human beings, we all should also respond. And in that way, we can come to know very nicely. So I must congratulate Sister Pandey, and also for Gujarati translation, of course, Ramesh ji, you are there. And also Sarang, you explained that particular visit to Adyar in the way. I had also 3 or 4 experiences there at Adyar in the 80s when I came there for the first time. So, and that in the night time, that was also a kind of experience that we had in Adyar, but that is not the time to say about anything or mention about anything. Time just limits us in the way that we can go on. Okay, thank you very much for this particular program. Taralji also, congratulations to you. So much, Thank you. Sudan ji, Shinde ji, all the 3 speakers, Rachna ji, Sarang ji, and तरल जी, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। एक मिनट। हाँ, मैं सारंग साहब को और रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे इस जिसको कहना चाहिए इन स्टोरीज को बहुत अच्छे से नरेट किया। इसके अलावा तरल जी और उनकी बेटर हाफ अर्चना मुंशी जी को, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ रख सकूं। और मैं आपको बताऊं कि जो ये आपने प्रेजेंटेशन देखा, हमारा पिक्चराइजेशन जो देखा स्टोरीज का, ये मेरी रिसर्च स्कॉलर है काजल, उसने और अश्विनी शर्मा, इन दोनों ने मिलकर के उसको बनाया और उसको हम लोगों ने बैठ करके करेक्शन किया। हाँ, हमारे साथ अश्विनी है। अश्विनी जरा सामने जाओ, उन 2 में से एक है हमारे सामने। क्या बात है, अभी कहाँ चला गया? करो क्या करो, ठीक, 1 मिनट है हमारे साथ वो। अच्छा। हाँ, अभी बत। अरे उठ के ही आ जाते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से कुछ हुआ? हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है। हाँ, सीधा कर लो। हाँ, ये है, ये अश्विनी है हमारे रिसर्च, और इनको बराबर मैंने बिठा रखा था कि कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो ये ठीक करेंगे। तो इन लोगों की वजह से ये प्रेजेंटेशन आपके सामने था, तो मैं इन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जितने लोग इससे जुड़े थे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात को सुना। और अगर किसी एक व्यक्ति के भी दिमाग में इस चीज को लेकर फर्दर क्यूरियोसिटी जागृत होती है और वो इसके बारे में और पढ़ता है और इस पर विश्वास करता है कुछ, और अपने आगे के जीवन की घटनाओं को इस परिप्रेक्ष्य में देखता है जहां उसको मदद मिल जाती है, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये 15 मिनट प्लस 15 मिनट 30 मिनट बोलना सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो आधे घंटे का प्रेजेंटेशन था, वो एक बहुत बड़ी चीज को सरल तरह से सब में समावेश कर गया। कहते हैं ना कि इनविजिबल हेल्पर और इनविजिबल वर्ड के बारे में जान रहे थे, लेकिन वो इनविजिबल भावना इन चित्रों ने और आपके प्रेजेंटेशन ने अदृश्य रूप से हमारे अंदर भर दी, मैं यही कहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आते रहिए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के साथ। इस पर और भी आपने बोला था सेकंड पार्ट करेंगे, तो जब भी आप तैयार हो मुझे बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, अर्चना मुंशी जी, आपसे निवेदन है कि आप शांति दो। सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद।